Okay, let us start. Yeah, so this is going to be a Q&A session basically. So if I can straight away take your questions and go into it in detail. And there is another thing I need to discuss about the total PECUI. We are actually currently working on that tool. So lots of changes are going to be there. So I need to explain about that also. So before that, we'll take up your questions if any questions are there. Any specific, I can go into it in deep. So what do you want me to start with? So those who want to discuss in Hindi, आपको कोई है जिनको कुछ डाउट्स है जो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूँ? ऐसा कोई टूल है जिसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए, डिटेल में जानकारी चाहिए, मैं उसके बारे में बोल सकता हूँ। या आप सर ये जो फ्यूचर इंट्राडे ओआई ब्रेकअप थोड़ा खोलेंगे सर? हाँ, ओके। सर बैंक निफ्टी का ओके। सर ये जो 3-5 से जो शुरू शॉर्ट कवरिंग है, मतलब उसको क्या मतलब, ये जैसे कि माइनस है, हाँ, तो ये मतलब क्या मतलब कैंडल भी कुछ ज्यादा कुछ ये नहीं है, मतलब क्या है वो? मतलब नहीं, ये जनरली क्या है, ये इंट्राडे के पोजीशंस क्लोज हो जाते हैं लास्ट में। तो मैंने ये ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि ये कोई भी दिन आप जाओ तो आपको ये दिखेगा। आपको कभी भी जाओ, जनरली लास्ट में जो होता है, जो एंडिंग में 3 बजे के बाद जो होता है, तो वो ऐसे ही होता है जनरली। तो बड़े बड़े आपको पोजीशंस दिखेंगे। तो जैसे कि 2:30 बजे जो हुआ है 2:30 को 4525, तो ये भी शॉर्ट कवरिंग है मतलब जो 4005? हाँ ये वाला। हाँ, ये तो एक्चुअल शॉर्ट कवरिंग रहेगा मेरे ख्याल से। मगर ये जो शॉर्ट कवरिंग मतलब ये माइनस हो रहा है, मतलब ऑप्शन का चेंज तो सब अनवाइंडिंग कर रहे हैं। हाँ, ओआई चेंज, ओआई क्लोज हो रहे हैं, यानी कि कम हो रहा है, यानी कि पोजीशंस क्लोज हो रहे हैं। अगर ये प्लस में होगा तो मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। हाँ, जनरली अगर ये हाँ बराबर है, अगर ये प्राइस चेंज ऊपर होगा और ये भी ऐसे ओआई भी ऊपर बढ़ेगा, यानी कि यहाँ जो आपने देखा है, प्राइस ऊपर है और ओआई भी ऊपर है, तो लॉन्ग बिल्डअप रहेगा, यानी कि ऊपर जाएगा जनरली। क्योंकि यहाँ से देखेंगे आप 470 से 486 494 गया है, तो बस वही दिखा रहा है बस कि ओआई चेंज हुआ है प्राइस के साथ। प्राइस के अगेंस्ट जब होता है तो फिर वो ओआई जब प्राइस के अगेंस्ट चेंज होता है तो वो ऑपोजिट होता है, शॉर्ट कवरिंग या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग। यहाँ जैसे हुआ था, वो ओआई नेगेटिव, प्राइस नेगेटिव, ओआई नेगेटिव, सो लॉन्ग अनवाइंड। ओके सर, ओके। या सर ऑप्शन ओआई ब्रेकअप में हाँ सर बहुत बार ऐसे देखने मिलता है, जैसे 930 में एक साइड लॉन्ग बिल्डअप आया है और अपोजिट में शॉर्ट बिल्डअप, और सडनली उसी का सेकेंड वाला 945 में रिवर्स हो जाता है। हाँ, तो एक तो कैसे ट्रेड करें सर? हाँ, तो पहले तो आप ये हायर टाइम फ्रेम पे जाइए, क्योंकि ये आपको जनरली आप अगर ट्रेड ले रहे हैं तो फिर आपको कुछ देर तो आप ट्रेड में रहने वाले, तो बेटर ये रहेगा कि आप तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाए और वहाँ पे देखें, और फिर यहाँ पे जो बिल्डअप है वो उसी के डायरेक्शन में ट्रेंड लीजिए, और एक बार ट्रेड लीजिए, और वो ट्रेड जब आप उस पर लेते हैं प्राइस के हिसाब से लीजिए और एग्जिट भी प्राइस के हिसाब से कीजिए। इसमें सिर्फ आप डायरेक्शन देखिए ट्रेड लेने के पहले या अराउंड जब आप ट्रेड लेते हैं, तब वो आपके डायरेक्शन में होना चाहिए। ये जो बिल्डअप होता है वो अगर हो तो फिर ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे फिर थोड़ा चेंज भी हो जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अगर आप प्राइस आपका चार्ट में अगर आप उसी के डायरेक्शन में है तो फिर वो ठीक है फिर, लेकिन ट्रेड लेने के टाइम और लेने के थोड़ा पहले ये आपके डायरेक्शन में होना चाहिए। ये आप 15 मिनट्स पे देख लीजिए, 15 मिनट्स के नीचे जाएंगे तो फिर अब बहुत फ्लक्चुएशन रहेगा इसमें। हाँ सर, 15 मिनट्स में जैसे 930 में पहला सिग्नल आता है, तो जैसे एक साइड शॉर्ट और लॉन्ग दिखाता है, और 945 वाला ही नेक्स्ट वो रिवर्स हो जाता है, शॉर्ट इधर और लॉन्ग। ठीक है, अगर ये आपने शॉर्ट बिल्डअप और ये शॉर्ट का सिग्नल लिया है
और उसी के हिसाब से आपने अगर कॉल शॉर्ट किया है या फिर पुट बाय किया है इसके हिसाब से, तो फिर आप ये लॉन्ग बिल्डअप पे आप सिर्फ जाके फिर से देखिए चार्ट पे कि आपको ऑपोजिट का ट्रेड मिल रहा है या नहीं। जनरली क्या होता है कि यहाँ पे आपको लॉन्ग बिल्डअप का सिग्नल आ जाएगा, लेकिन चार्ट पे आपको लॉन्ग का सिग्नल नहीं आएगा। तो वो आपको फिर प्राइस के हिसाब से ही आपको रहना है, और वो ट्रेंड के हिसाब से देखिए, क्योंकि अब देखेंगे कि यहाँ पे ये सिर्फ एक छोटा सा पुल बैक होगा और ये आपको उल्टा सिग्नल नहीं देगा। अभी शॉर्ट का ही ट्रेड आपका चलेगा, और क्योंकि आप ये प्राइस देखिए, आप प्राइस उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा यहाँ पे। आप थोड़ा बड़ा है ये, लेकिन फिर भी ये मेरे ख्याल से ये सिग्नल आपको चार्ट पे बाय का सिग्नल यहाँ पे नहीं आएगा मेरे हिसाब से। जैसे आप कभी विपसॉ हो सकता है कभी एक आध बार, मगर ये जनरली तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपने अगर शॉर्ट लिया है, यहाँ भी पता नहीं, आपको चार्ट पे जाके देखना पड़ेगा। यहाँ पे शॉर्ट सर एक बार 16 का निकालिए, 1 जून। कौन सा आप, सॉरी ये कौन सा है? 16। 16? यस सर। नहीं, कौन से डेट का बताया आपने? 1 जून का सर। 1 जून का? यस सर। बैंक निफ्टी का यस सर। निफ्टी का सेकेंड वाला एक्सपायरी होगा और 1 जून। हाँ, तो जैसे ये फर्स्ट का 2 पार्ट है, 930 और ये 930 लॉन्ग का था, तो ये क्या 16,000। तो अब देखेंगे इसमें, एक मिनट जाता हूँ। चाहिए सेकंड का चाहिए, सेकंड। सर ये सिग्नल ये ढूंढने में बहुत टाइम लगता है सर ये। हाँ, ये अभी ये काम चल रहा है सर इसमें अभी। ये इसको बहुत सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। अभी थोड़ा ये इश्यू तो है, पता है मुझे, मगर ये हम लोग इस पे काम एट प्रेजेंट चल रहा है इस पे काम, और एकदम इजी कर देंगे इसको डेफिनेटली। तो 6000 ये कौन सा सी था, पी था? एक मिनट, लॉन्ग था ना, तो सी देखना है हमको। और ये 1 जून का ना? यस। तो मैं इसमें ये 2 मिनट के आसपास का टाइम फ्रेम। हाँ, ये तो एक्चुअली ये चेंज तो हो गया यहाँ। अब यहाँ पे अगर बाय करते हैं 931 पे और यहाँ पे स्टॉप, हाँ ये तो ठीक है, ये कुछ नहीं कर सकते। ये तो स्टॉप लॉस लेना ही पड़ेगा सर, और हाँ, कोई फिल्टर नहीं लगा? और नहीं, आप देखिए, आप फिल्टर तो आप लगा सकते हैं, आप 3 मिनट्स भी लगा सकते, आप हायर टाइम फ्रेम थोड़ा जा सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस बढ़ होगा ये जाएगा। हिट तो होगा, कभी ये होता है, ये कुछ नहीं कर सकते। ये बस ये छोटा स्टॉप लॉस लेके इसमें आइडिया इतना ही है कि आप बड़े ट्रेड्स आगे जाके पकड़ेंगे आप। तो ये वाला ट्रेड आपका मेन रहेगा, उसमें छोटे छोटे स्टॉप लॉस रहेंगे। ये कुछ लोग क्या करते हैं इसमें, मेरे ख्याल से ये बुक कर लो जल्दी, फिर वो दिक्कत हो जाएगा फिर अगर जल्दी बुक। हाँ नहीं, इसमें एक आइडिया क्या कर सकते हैं, वो जो मल्टीपल लॉट्स ट्रेड करते हैं, यहाँ पे आप सिर्फ इनिशियली आप कम लॉट्स में एंटर होंगे, अगर एग्जिट हो गया तो फिर ऐड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसे जैसे ये ट्रेड आप जब पकड़ेंगे, ये 100% ये सिग्नल ये आपको भी मिलेगा। तो आप ये यहाँ पे एक आप लॉट ऐड करेंगे, फिर ये छोटा सा पुल बैक होगा, यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, यहाँ पे और एक ऐड होगा, ये पुल बैक पे और एक ऐड होगा, और फिर ये 2-3 बार ये बहुत क्विकली ऐड करके आप ये कैप्चर करेंगे, और यहाँ पे कहीं एग्जिट हो जाएंगे। मे बी यहाँ पे थोड़ा एग्जिट, यहाँ पे थोड़ा एग्जिट, यहाँ पे थोड़ा, ये करते हैं ये कुछ लोग। मैंने लाइव देखा है ये। अब मैं तो नहीं करता, इंट्राडे टाइम नहीं होता है मेरे पास, लेकिन ये इसमें ऐसे ही करना पड़ता है। स्पेशली ये बाइंग के बारे में है ये। तो बाइंग के लिए तो आप मल्टीपल लॉट्स आपको ट्रेड करना ही है, लेकिन आपको फर्स्ट सिग्नल पे ऐड नहीं करना है, फर्स्ट सिग्नल पे कम ऐड कीजिए। अब वो भी कुछ लोग वो भी नहीं मानते हैं, कुछ लोग ऐड करना वगैरह नहीं करते हैं, तो उनके लिए तो फिर ये हिट तो हो जाएगा। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर एक दो ही लॉट्स लेंगे यहाँ पे और एग्जिट हो जाएंगे, और फिर फाइनली ये ट्रेड जब आप पकड़ेंगे, तो इसमें आप ये पूरा ये जो भी 1-2-3 लॉसेस आएंगे, ये आप इसमें कवर कर लेंगे। तो जो मीन्स जब ट्रेंड हाथ में आता है तो पूरा जल्दी प्रॉफिट बुक नहीं करना है, तभी ये फायदा देगा। हाँ बराबर, ये तो आपको फॉलो करना है ये ट्रेंड, क्योंकि ट्रेंड तो फॉलो करना है। इसमें मेन यही है कि इसमें
आप इसके हिसाब से आप ऐड कर लेंगे, आप पोजीशन इनिशिएट करेंगे, लेकिन आपको फिर ऐड करना है, जल्दी ऐड करना। और एक बार आप इनिशिएट करने के बाद फिर आप ये ज्यादा मत देखिए, क्योंकि ये अगर आपको ऑपोजिट का ट्रेड आएगा तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगा जब आप ट्रेड में है। और फाइनली आपको ऐसे ट्रेड्स पकड़ने हैं, आपको जो लंबा वाला होता है, जनरली एक तो आता है, जनरली एक तो आएगा दिन में, जनरली रेयर केसेस में नहीं मिलेगा, मगर जनरली तो आता है। तो लेकिन ये ऐसे पॉइंट पे फिर आपको एक दो जल्दी ऐड करने ट्रेड, जैसे आपको आपका ट्रेंड कंफर्म करता है तो ऐड करके फिर ये कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू। ओके Sir, can you go to the total PEC OI difference? Yeah, okay. Yeah, PEC OI difference, I'll go to the one, were you there in the previous webinar? Yes. Yeah. Okay, so I'll go to that because there's some more change has been done. Oh, okay. And just a computation change, there was some issue that I had found. So this is that. If anybody was not there in previous webinar, kindly note this URL. So because you can access it directly for the next few days, we are still working on it. There is one more change to be done in the price change part and futures OI change part. Futures price, these two also will be slot wise changes. Currently these are the full per daily change. This and this is daily change. This also will be making it slot wise, bar by wise change. So here this we have fixed this. There was some issue I had found in this computation here, percentages computation. So that has been fixed today, but the chart needs to be fixed. This chart is actually not correct at the moment. This is showing this particular COI change slot wise. That is, this particular change is the difference of these two slots. And that is the change in the OI of these two slots. This minus this is this actually. And then this minus this is this. And similarly for put, these changes are over here. And this percentage change is the percentage change of this OI. So this will be very useful, I think, but there is one more chart to be added here. And this chart is currently not correct. And this chart will be actually shown in bars. These are actually the OI changes, these changes that are being shown here. So actually another chart will get added here as a tab. So yeah, what was your question about total PEC OI? We can go back to the old one then, because I just had a question on the chart. Fine, yeah. Fine. I will go back to the old one also. Yeah. So more interested in the chart rather than the table. Okay. And you can change it to, let's say, Nifty, latest Nifty. Yeah. So here, I mean, if you look at it, I mean, it's after 10:30, it was more like, it's going to fall, right? Yeah. Yeah. But if you can on the OI change difference as well. Yeah, my question was, in one of the previous webinars, you had actually mentioned that the moment it goes below zero, it is kind of, it started the downfall. Right? Bearish, yes. Yeah, bearish. So question here is that, is there a percentage OI change difference that after which you can confirm that, yes, it is now from this point onwards, it's really bearish? Is there something that we can do so that we can go for naked buy or sell, right? That is a very difficult question to answer, because see, this particular OI change could be different for different days. I'm not sure. I need to study more. I think you'll also have to study more on this, because this OI change difference can change for days. It could be very different for Wednesday and extremely different for Thursday, because Thursday this is going to be huge. Whatever changes are going to be huge. So maybe some percentage figure can be there, but I'm sure it is going to be different for different days. Yes. Friday, Monday, it may be different. Tuesday, it can be different. Wednesday, slightly more different. And Wednesdays, Thursdays, it can be similar. And Thursdays, it is going to be drastically different, in my opinion. So you'll have to probably study and then form an opinion, because I'm not sure. I mean, so in that the only thing that I can say is, once this falls below zero, then and stays below zero for a while, then it's definitely the call
writers are in control, and then you can look for lower prices. Generally, that is the way it goes. Yeah. So in such situation, right? I mean, what you're seeing right now, right? Yeah. Is there a way that you can suggest that we can actually go for a naked strategy over here, just by with this in mind? And yeah, you can that, actually you could because you could start shorting calls here, and then watch unwinding. Watching unwinding is very important. It will give you definitely it will give you clues as to what is happening with the trend, whether it's giving. So if you, once after this you start shorting calls, you definitely need to start seeing put unwinding, because then put writers need to get scared if the price is going down. If they're not budging, if you don't see unwinding in puts, then maybe the price could go up. I mean, then you need to be, if you start seeing strong buying in puts, strong built up in puts, then that could be a problem. So you need to start watching unwinding, and then you can keep your stance negative over here, but you need to closely watch put unwinding. It should confirm, because you need confirmation. Then you can probably, once you start seeing more unwinding, then it'll let us see what I can show you. Unwinding Nifty, this is what we are looking at. Yeah, here initially, yeah, this put unwinding is here. That is, this is below 0. So put unwinding is there, put unwinding is there here. Then here it was less, but at least we did not see call unwinding. If you see call unwinding, this is tricky. Here it got a little bit tricky here, because then there was some slight call unwinding over here. We'll go and see, look at the percentages also. It was not too significant. Here, suddenly put unwinding also started. Initially here, call unwinding was also there. This big put unwinding gave up. I mean, after this, the put writers have given up. Then from here, it was down only. Because big unwinding here, big unwinding here, big unwinding here. I mean, puts, they are not interested in writing puts now over here. They just want to dump the puts. So here it is very strongly bearish. It is clear. Even though call unwinding was there here, the stronger put unwinding is here. So you will see that over here basically. Similarly, so put unwinding you have to see over here, slightly above 1% or so. You have to see consistently, and there should be no strong call side unwinding for bearish. So you need to see this. You can look at this difference and start shorting calls, or maybe even if you can even, if you don't want to straight away naked short the calls, you can short lower straddles here, straddles below the price over here. So those also will be bearish straddles anyway. Right. So you can do that, or you can short calls also. It's up to you, but you need to keep an eye on the unwinding that is happening to confirm your view. That's it. Okay, thank you. But sir, by switching on VWAP, will it not give us more information? You will get one more input. Yeah, that is there. You will get definitely one more. You can include all that, whatever technical stuff you want to include. Definitely, this gives a lot more. I mean, over here, you can watch more keenly, because and then you would know that generally either price will break out from here or it will break down. So there could be a reversal here. PCR probably also will give you that information over here by going flat over here. So you can include whatever you want, all those stuffs. You can include whatever you want for your analysis. Definitely. Yes. Right. Yeah. Yeah. So the thing that I wanted to say, yeah. Mr. Srikanth? Yeah, tell me. Good afternoon. I have one query. I have used other tools as well in this total put call, the specific tool that you're talking about. It only has on the chart specifically has the difference between the the put change and the call change. Yeah. Would you also be considering to include on the chart the total call and the total put? Because that gives a good comparison
Total what I call love of all is strikes, you mean? not only on all strikes. In fact, to get an edge, what we normally do is we consider the plus minus 2 or 3 strikes from ATM. To get to see the crossover of the put change and the call change. So that is fantastic. But this is exactly that. You Yeah. can select intraday. I've seen that. That's fantastic. What I was trying to understand is these figures that we're getting here are for the change in OI, right? Yeah. On the put side and the call side. You're also calculating in the data table the total OI. Okay, the OI itself. OI Yes. itself. So would you consider plotting that? The OI difference is there. OI. Yeah, but that doesn't really give you a trading signal. While this is a fantastic tool. Okay, you want the call OI and put OI lines also. Yes, and I have seen it on other tools where obviously I don't wish to speak about that, but I've seen a mentor suggesting that you see the signal from the call change and put change. Okay. Also, you see it from total OI as well as that is for total call as well as total put. I hope I'm trying to, if both are plotted, and this is available, at other sources, not over here, though I'm using this for the current signal and it works fantastically. Obviously, we look at the, nearer strikes to get the edge. Yes. Okay. I do not know if that is. If I remember, I think we are going to add that somewhere. I tried looking for it. I think it is there over here, if I'm not wrong. Is this what it was? I was trying to look at it. Yeah. Yeah, this is the one. This is the one actually. So that is what I wanted to ask you. Why? When you type OI here, this is the total OI that you're getting. Yeah. And you can use that for selected strikes, for example, plus minus 2, either of the indexes. Yes, you can here. Yes, you can. Okay, so these are just the total. But on this chart, then I will not get the total OI change. You would not be. Okay, you want combined both the OI change and OI on a single chart. No, it's fine if it is on separate. So all I have to do is just click here. That's Alt. Fantastic. Thank you. I think this solves it then for us. Yeah, that's exactly what you've done. Yes. So this is the OI change, and the other one's the total. OI. Yes, correct. Thank you for bearing in. Thanks for answering. Thanks. Okay. So can you please explain maximum pain, max pain? Yeah, I will. Any question first about total PCOI? This we have fixed the percentage. There was an issue in the percentages, so it will be a lot more. What we were doing is these percentages were being calculated on the OI change itself, so that was creating some issue where negative OI change was there. So now these percentages are calculated on the total OI, so you'll get a more clearer picture over here. So and the percentage changes will not be crazy. I mean, because on expiry day we saw that these changes were even hundreds of thousands of % and all that. So that was very crazy figures there. So this will be more better now because it'll be easier to keep a number in mind, because you will see that the unwinding that happens generally over 1% or so is going to be significant over here. So you'll be able to gauge that more better. So it will be more uniform across the days. Of course, it can be a little bit different on Wednesdays and Thursdays. So, okay, fine. That's about this. Any questions about the PEC? Sir, one question, sir. Yeah. So the question which was asked before, you showed that you have got the cumulative OI tool, which shows the difference in the calls and the put. So how many calls were added and how many puts were added? Yeah. In the cumulative one. Yeah, this is the one. Now in the other one, that OI change, that call change is the same as the cumulative. No, what is the difference between the two?
No, this is open interest, and this is a sum of cumulative sum of OI changes actually. Open interest change. Yeah, this is the this tool is the cumulative tool, not the old tool, the cumulative OI change. No, this is the This is under the beta one. So we have changed this a bit because earlier OI was not there. So this is actually the open end. This is actually these are the open interest figures. Okay. And when you click this for the same strike, these are the open interest change figures since morning. Since morning actually. Yeah. So in the cumulative OI change, the zero line comes, while in the OI the zero line will not come. Zero line will be there, sir. Sir, This is for actually the OI difference in OI. Actually. So the OI is what? Is the pure OI or is also difference in the OI? Only OI this figure? This has to be pure OI actually. So that if it's a pure OI, then the zero line has got no meaning, no? So Actually, in this case, because see, if you see the OI will obviously start for the day, whatever where it closed for the previous day. So it's straight away this, but since we are plotting the difference, so we'll still need this zero line. I mean, it may not be visible every day. So, but in this case, because the OI, the put OI went above call OI. So this difference we are tracking. So for this particular difference line, we need this zero. Of course, on some days it may not display at all. So the OI which is plotted is the pure OI, you know, how it is pure changing. OI. Yes, it's pure total OI. Yeah, whatever OI outstanding is there, that's outstanding. Yeah. And the cumulative is the difference one. That is how much added and how much this OI change that you see here. Now, when you click on OI change, what you are seeing is from the morning. Yeah. Wow, the OI changes. Right, sir. Okay, thank you, sir. Okay. So I'll any questions about this tool? I can move ahead. So I'll go ahead then. Max Payne, somebody had a question. Yes. Yeah. Oh, yeah, I'll start with Max Payne. Max Payne is basically supposed to be the level here that you see, the level where on the expiry day, the script can settle. That is the final, it could close on the expiry day around these levels. So it is based on OI basically, where the maximum buyer has the maximum pain, where if it expires, buyers as a whole will face the maximum loss, or the least loss is faced by the option sellers. That is supposed to be the Max Payne level, basically. So these are the values actually. The values, that is the total, the price into open interest of calls and puts. So where the least value is, that is where generally it will expire, because that is where the writers are least. That is the theory. So that's the main idea. Or rather, actually, this is going to be the most actually. 1 minute. Put value, call value. Srikanth sir, one question I want to ask. Yeah. Could we start a straddle on the basis of Max Payne? You will have to, I mean, this will keep changing, and on expiry date, it will change significantly. And accordingly, we can change the straddle on the basis of Max Payne. You could do that. It could change very fast. Suppose, I mean, you would have to change on these occasions, basically. Yeah. Here, you could do that, and especially let me take a look. On see, you would have to, so many changes will be there, so you would have to do that many changes. I mean, that you could do that. Yes. So I mean, it's. Oh, thank you. You can try. Yeah. So what is this 1D, 5D buttons? 1 day. This is based on basically. Sorry, this is 1 day chart. 1 day's price movement and the Max Payne movement. Okay. And 5 days is for the past 5 days. Trading days, how much it has moved basically. So you see this chart from 30th to now, so 3rd. So the whole 5 days, how it has moved. That is what it shows.
So this call and put value which you were telling is also the same concept told by Vijayda also, that he used to take out the call value and put value. Okay, who was Vijay? I am not sure. Vijay, okay, Vijay Kumar Sharma. Yes. Who appeared on face to face. Yeah. I am not sure what he was referring to. Where he was talking about Max Payne. Yes, Oh yeah, okay. Sir, he was telling about the total value of the call writers and the Yeah, put actually, I think he was referring to in the money options and Yes. the value Yes. of calls and puts. Yeah, Yes. that is true. Yeah, but So, this sir, is basically you had a question. Yeah, so that value which he takes can be taken from this Max Payne option. The value which he takes. This is the call value and the put value. Yeah, you can probably take it. Currently, we are adding it to option chain. So until then, you can. I don't know exactly what this is. I'll have to take a look. I don't know if this. Well, I think this. Yeah. This will probably give you the value if price expires at this particular level. What is the value that is going to be intrinsic value that is going to be left is what is shown here. I think that is what this means, because that is the final value that will be left when the price expires at this level. This is what this says. Because here, if you see, extrinsic value here is going to be the least at the moment. So that is what this is showing. Or am I saying something wrong? I don't know. Can I give one input, Shrikant? This is Amish. Yes, sure. Yeah. I personally feel Max Payne should just be an idea to assess where the market is headed. Sure. Actually, from a strategy perspective, one should actually use their technicals or whatever they use. I mean, ideally, I would. It's just a snapshot telling you where people are going to lose money when the market moves. Yeah. So exactly. if market moves to 19,300, that's where the maximum call writer is going to lose his money on expiry. Yeah. And if it moves to 14,300, that's where the maximum pain for a put writer would be, and they will start unwinding. Yeah. So this is just a snapshot to explain you how people will change their position, more like a psychological snapshot. But it should not be the only reason or basis of picking up a strategy and then doing a trade on expiry. Very true. That is, I think there will be too many changes you need to do to the straddle, strangle, or whatever. And I don't know if it is going to be meaningful. So you have to be very careful about this. So what you have said is true. Very true. Yeah. Anyway, so this is it. So Max Payne, any questions? I don't know. This is what I can tell you about that. Generally, the direction in which the Max Payne is moving is generally the direction where price is moving. So I don't know how this is definitely not in any way predictive. It's just showing you that once price is moving first and then the Max Payne is moving. So the open interest is moving on that side. This is just indicating that. So that is what this is. You might as well use the price itself, because that is what it is. Okay. So. हेलो. Yeah. सर एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जब हम ओपन इंटरेस्ट जब हम ये देखते हैं कि बुलिश ट्रेंड दिखता है, कल के जैसे उसमें मॉर्निंग में बियरिश दिखा दोनों बाजू, सॉरी बुलिश दिखा, बट आफ्टर मार्केट सडनली बियरिश चालू हो गया. तो कैसे हमें पता चलेगा ट्रेंड एग्जैक्टली कैसे पकड़ना चाहिए हमें? ओके. ये जो मैंने बताया था वो ये यूज किया है टूल आपने? नहीं सर, मैंने ये यूज नहीं किया हुआ. तो ये एक बार ये URL देख लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़े चेंजेस हैं. बेसिकली ये टूल है टोटल PCOI. ओके. और उस पे ये वाला URL आप ले लीजिए. मैं इसमें ये चैट में भी पोस्ट कर देता हूँ थोड़ी देर बाद. तो ये इस पे आप आने के बाद यहाँ पे आप देखिए, आप कौन सा निफ्टी लूँ एग्जाम्पल, या कौन सा चाहिए? सर बैंक निफ्टी बेटर टू बैंक. तो बैंक निफ्टी, इस पे ऑल स्ट्राइक सेलेक्ट कीजिए. हाँ. और इसमें आप अगर जाएंगे, अच्छा इसमें ये चार्ट बराबर नहीं है, तो मैं एग्जांपल ये पुराने इसमें ही देता हूँ. चलेगा. ऑप्शंस में जो टोटल PCO है,
एक मिनट, ये हाँ, इसमें जो ये कॉल वाला लाइन है, तो आप ये हाँ। देख लीजिए, कॉल वाला लाइन अगर पुट वाले लाइन के ऊपर हो हाँ। तो ये बेरिश होता है। ये तो पूरे दिन बेरिश था एक्चुअली। निफ्टी में थोड़ा इश्यू था, ओके बैंक निफ्टी में तो कुछ भी इश्यू नहीं था, पूरा का पूरा बेरिश था एक्चुअली। आप अगर निफ्टी देखेंगे, निफ्टी में थोड़ा अलग था। निफ्टी ओके में क्या हुआ कि आप इनिशियली बेरिश था, यहाँ पे ये जो है इनिशियली बुलिश था, पुट का लाइन ऊपर था यहाँ पे, ओके और ये 10:30 के बाद जो है पूरा का पूरा बेरिश हो गया। तो ओके यहाँ पे थोड़ा ओपन इंटरेस्ट आपको बुलिश इंडिकेशन दे रहा था इसमें ओके हाँ सुबह में। तो अब ये चार्ट मॉनिटर कीजिए आप। ये चार्ट जनरली ये जो डायरेक्शन आपको दिखाता है, तो जनरली उस डायरेक्शन में होता है। और ये इसके साथ आप प्राइस भी मॉनिटर कीजिए। ऑफ कोर्स प्राइस भी आपको मॉनिटर करना है, प्राइस वीवैप के किस तरफ है वो भी आप देख लीजिए। और तो ये दोनों प्राइस और ओपन इंटरेस्ट जब ये आपको एक ही साइड दिखा रहे हैं, तो फिर आपका वो ट्रेंड, उस तरफ का ट्रेंड स्ट्रांग है। और ये ऑपोजिट दिखा रहा है, यहाँ पे आपको वीवैप के नीचे है मगर यहाँ पे बुलिश दिखा रहा है, तो आपको ये सिर्फ वेट एंड वॉच अप्रोच है यहाँ पे। तो इसके बाद यहाँ पे भी बेरिश है, यहाँ पे भी बेरिश है, तो आप यहाँ पे बेरिश स्टैंस ले सकते हैं। बैंक निफ्टी में एक बार देख सकते हो सर, बैंक निफ्टी में दिखा सकते हो कैसा? हाँ, बैंक निफ्टी में तो पूरा बेरिश था, सुबह से बेरिश ही था। ये ओके पूरा का पूरा कॉल लाइन ऊपर ही था पुट लाइन से, और ये वीवैप के भी नीचे ही था, तो पूरा का पूरा फुल डे बेरिश था। ओके 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 समझा मुझे। ओके तो ये टूल बेसिकली हमें ये देखना है कि कॉल का लाइन ऊपर रहना चाहिए और वीवैप के नीचे रहना चाहिए, तो इट्स अ बियरिश। हाँ बराबर, राइट, ओके करेक्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके ओके। सर एक क्वेरी है, आप फ्यूचर्स का अगर चार्ट खोले बीटा वाले पे, हाँ सर इसमें जैसे एक इंडिकेटर लगाते हैं नीचे ओपन इंटरेस्ट का। ओके ओके। सर इसमें ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये कौन सा आता है? पुट कॉल कंबाइंड चेंज क्या होता है सर? ये ओपन इंटरेस्ट तो फ्यूचर्स का है, ये कॉल फ्यूचर्स का कॉल ऑप्शंस का नहीं है। ओके ये फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट। सर ये ट्रैक करने से क्या हो एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है? ये जनरली ये जो ऑप्शंस, ये जो ओपन इंटरेस्ट जब आप ट्रैक करते हैं तो ये वॉल्यूम के जैसे होता है। ये प्राइस के साथ ओपन इंटरेस्ट जाना चाहिए, प्राइस के साथ होना चाहिए। अभी आप ये मैं यहाँ पे ट्रैक करने के लिए ऊपर डाल देता हूँ, ऊपर डालता हूँ और इस पे मूविंग एवरेज इनेबल कर देता हूँ। तो ये अगर यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जा रहा है, तो फिर ये हाँ, तो हाँ, ये यानी कि इसका मतलब ये है कि पूरे पोजीशंस जो बन रहे हैं वो ट्रेंड के साथ बन रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे फ्लैट होने स्टार्ट हो गया। तो जो फ्लैट होने स्टार्ट होता है जो ट्रेंड के अगेंस्ट, तो यानी कि यहाँ पे पॉज आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है या फिर कंसोलिडेट होके ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइस यहाँ पे फ्लैट हो गया, यहाँ पे नीचे आ गया, यानी कि ये यहाँ पे काउंटर है, यानी कि ये अप ट्रेंड यहाँ पे अभी रुक गया है यहाँ। और यहाँ पे जब प्राइस, हाँ सर एक बार आप 3 जून को आई। 3 जून सर राइट साइड हाँ, और राइट सर ये 3 जून है, यही है सर। इसमें आप देखिए जो प्राइस है ये नीचे जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट की डेड लाइन ऊपर जा रही है। हाँ, यानी कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो रहा है। हाँ सर, शॉर्ट्स बिल्डअप हो रहे हैं। हाँ, शॉर्ट्स बिल्डअप हो रहा है, करेक्ट। सर इसको अगर उसी समय टोटल पीई सीई से देखें क्या हो रहा था तो क्या नजर आएगा? टोटल सेम टाइम, ओके, न्यू टैब में सर। हाँ, बैंक निफ्टी ना? हाँ जी सर। हाँ, पूरा का पूरा बेरिश है ना, ये अभी देखा था हमने, पूरा का पूरा बेरिश है, स्ट्रांगली बेरिश है। मतलब अगर सर दोनों को कंबाइन करें तो भी एक अच्छा चीज मिल जाएगा और स्ट्रांगली। हाँ करेक्ट, वो क्योंकि वो ये वाला ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर्स का है और ये वाला ऑप्शंस का है, तो बराबर है, आपका कंफर्मेशन आएगा, आप करेक्ट है, बराबर। थैंक यू। ओके, sir, this futures OI is the COI or of that particular this thing? This is for the expiry you have selected. If you
if you select this is combined. Cumulative, we call it Okay. cumulative. Okay, sir. Got it. Got It is it. combined for all expiries. Okay. Srikanji, Surendra here. Sorry. Surendra speaking. I want to know on this chart, your line, parallel line, red, blue. You what indicator is this? This is the CPR actually. These are pivots. These are the These are the pivots. Yes. So pivots का parameters क्या रखा हुआ है? ये बस ये standard है, कुछ भी नहीं है इसमें. I have disabled all resistances. Only a pivot BC and TC जो है CPR का जो होता है वो enable किया है मैंने. और ये generally ये क्या मैं ये ट्रेंड के लिए यूज करता हूँ. ये करंट डे और प्रीवियस डे का अगर ब्रेक हो जाए एक दिन, तो यानी कि ये दिन हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे बेरिश हो गया मेरे लिए. तो जनरली दो दिन का मैं यूज करता हूँ. यहाँ पे करंट डे के नीचे आया है तो मैं ये नहीं मानता कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है. ये अगर ब्रेक होता तो फिर ट्रेंड चेंज होता. CPR का फुल फॉर्म क्या हो गया सर? CPR आई रियली डोंट नो. CPR with pivot. क्या? Central pivot range. Central pivot range. Yeah. Central pivot range. Thank you. I don't use it actually क्योंकि ये मैंने हम लोग ने recently इसको ऐड किया है क्योंकि बहुत डिमांड में है ये, तो इसीलिए मेरे चार्ट पे है ये क्योंकि मैं टेस्ट कर रहा था इसको. So I don't really use it. लेकिन मैं ये I have plotted on chart and then I'm just trying it out. That's it. और एक बात है कि लास्ट फ्राइडे क्लोजिंग के पहले बीटा वर्जन में क्यूमुलेटिव ओआई में जो प्राइस रेंज था वो कैंडल्स में दिखा रहे थे. क्या वो आप वो प्राइस कैंडल्स में आगे दिखाएंगे कि व्हाट इज योर प्लान? नहीं, कौन सा वाला? वो ये वाला? हाँ, इसमें क्यूमुलेटिव चेंज में ये कैंडल्स पर ये हमेशा नहीं मिलता है. नहीं, ये तो अभी नया ऐड हुआ है ना, उसीलिए बीटा में है. वो बाद में यहाँ से यहाँ पे इस पे ऐड हो जाएगा, तो अवेलेबल रहेगा ऑप्शंस के अंदर. अच्छा, ओके. हाँ, तो ये अपडेट्स में सब आएगा, बट अपडेट का जो आपने दिया है उम्मीद, ये कब होगा? ये अभी एक हफ्ता लगेगा सर इसको. अभी ये मैं टेस्ट कर रहा हूँ, इसमें कोई इश्यू ना हो तो अब ये ऑलमोस्ट ये डन है. इसमें और कोई मोस्टली कुछ नहीं है. ये मैं सिर्फ टेस्ट कर रहा हूँ. ये टेस्ट कंप्लीट होने के बाद हम लोग इस पे मूव कर देंगे. ये नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा ये चेंज. ओके सर, थैंक यू. सर ये फ्यूचर्स चार्ट में ओपन इंटरेस्ट सर आप ऊपर कैसे ले गए? वो जो नीचे आता है हमारे में, एक बार वो दिखा दीजिए सर. हाँ, ये जो है आप इसको ठीक है, ये मैं निकाल देता हूँ फिर ऐड करता हूँ. हाँ सर, पहले डिफॉल्ट में नीचे आता है. हाँ, इसको आप सिर्फ क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं. इसको मैंने आप यहाँ पे क्लिक किया पहले, या अभी क्लिक किया है. क्लिक करके माउस को क्लिक प्रेस करके ऊपर ड्रैग करके लेके गया. ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर. ओके, ये एक मेथड है. और एक दूसरा जो है, अब यहाँ से भी कर सकते हैं, मूव टू एग्जिस्टिंग पेन अबव. ओके, ये भी करने से ऊपर चला जाए. ठीक है जी सर. तो ओपन इंटरेस्ट नीचे रहेगा, उसके ऊपर मूविंग एवरेज डाल सकते हैं सर, ऐसे ड्रैग. मूविंग एवरेज इसमें ही दिया है हमने, ये यहीं पे इसके अंदर ही है. एनेबल मूविंग एवरेज कर दीजिए. ओके. तो और ये यहाँ पे मूविंग एवरेज का पीरियड डाल दीजिए आपको अगर अलग चाहिए तो. बस यही है. हाँ, नीचे भी सेम, नीचे अगर मूव करेंगे यहाँ पे भी आएगा, वही आएगा. ठीक, तो एनेबल करना है. ओके. Sirkan sir, one question. Rajesh here. The futures chart. Now, if I'm a positional trader and watching the open interest, so I want to see a continuous chart of the last 3 months of the future charts with the OI. Is it possible, or I will get only the one month ka chart, the data? Currently, it's only contract wise. Our developers are working on adding continuous. It will be added in this only. Right, sir. Thank you, sir. Yeah. विकान जी, ये चार्ट्स में डबल मूविंग एवरेज 2 पीरियड्स का डाल सकते हैं ताकि हम क्रॉसओवर देख पाए? किस पे? इसके ऊपर? हाँ, इसी चार्ट पे जैसे प्राइस मूव कर रहा है और हम 2 पीरियड डाल देंगे, 10 and 20 and 50 डे या 10 and 30 डे, और क्रॉसओवर मॉनिटर करने के लिए डबल मूविंग एवरेज. 2 मूविंग एवरेज. मूविंग एवरेज डबल तो दिखा रहा है आपके ड्रॉप डाउन में. हाँ, ये तो है मेरे ख्याल से. ये तो बिल्ट इन ही रहेगा, ये बिल्ट इन है ये. फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड. हाँ, ये तो वैसे भी आप 2 मूविंग एवरेज डाल के भी कर सकते हैं. 3-4 मूविंग एवरेजेस भी अगर चाहिए तो आपको ऐड कर सकते हैं. अब ये अगर 3-4 डालने हैं, आप
3 4 जितने चाहिए उतने मूविंग एवरेज डाल के आप पीरियड चेंज कर दीजिए, आ जाएगा इसमें 4-5 मूविंग एवरेजेस आ जाएगा। थैंक यू सर। ओके ओके, एनी क्वेश्चंस ये चार्ट पे कोई क्वेश्चन? हेलो सर, हाँ। मुझे ये पूछना था कि टोटल पी और सी डिफरेंस जो आपने दिया है 1 मिनट में, ये बैंक निफ्टी ऑप्शंस में हम देख सकते हैं और कैसे देखना होता है? मतलब क्या आइडिया नहीं लग रहा है मुझे उसके बारे में, मैं नया हूँ, मुझे नहीं पता है। ये जो आपने दिखाया है ना मुझे, तो इसके अंदर हम 1 मिनट में क्या मोस्टली ऑब्जर्व करते तो वी नो अबाउट इट। क्या इसका कोई लिंक है आपका जिसके बारे में हम पढ़ सकते हैं उसके बारे में? हाँ, ये मेरा जो प्रीवियस वेबिनार है पूरा मेरे ख्याल से हाँ। ऑलमोस्ट पूरा का पूरा इसी पे है। ओके, तो वो लिंक आप शेयर कर सकते हो सर? वो आप एक काम कीजिए, यहाँ हेल्प और वीडियो पे ओके। जाइए, तो ये सीधा आपको हमारे चैनल पे लेके जाएगा। ओके। चैनल पे ये जो 29 मई वाला है, हाँ हाँ हाँ, इसलिए ऑलमोस्ट पूरा सेशन उस पे ही है। ओके सर, मैं देख लूंगा। थैंक यू। ओके Shrikant ji, one more question again on this total PECI OI diff. ये selected all strikes and selected all strikes और near ATM strikes में अंतर क्या दिखा दे? चार्ट जो नियर जो है, आप हाँ जी। जब आप सेलेक्ट करते हैं इसको, हाँ। तो ये करंट प्राइस कहाँ पे है उसके हिसाब से ये सेंटर प्राइस सेलेक्ट करेगा एटीएम, और उसके 3 मतलब उसके नीचे एक और ऊपर एक, ये 3 स्ट्राइक सेलेक्ट करेगा और उसका टोटल ओआई होगा, ओआई चेंज सब सारा पूरा सिर्फ ये 3 स्ट्राइक्स का रहेगा पूरा तो डेटा। इसका जो ग्राफ रहेगा वो क्या महत्व का है? वो भी सेम, वो सिर्फ वो जो स्ट्राइक्स आपने सेलेक्ट किए हैं वो स्ट्राइक्स का दिखाएगा। अगर वो नियर एटीएम है तो करंटली मार्केट जहां पे है वहां पे ओपन इंटरेस्ट कैसा चल रहा है, यानी कि राइटर्स, कॉल राइटर्स ज्यादा है, पुट राइटर्स ज्यादा है, वो यहाँ पे दिखाएगा। और ऑल स्ट्राइक्स में चले गए हम तो ये पूरा ओवरऑल मार्केट का दिखाएगा, यानी कि पूरे के पूरे सारे स्ट्राइक्स को मिला के। हाँ, तो जब हम ट्रेडिंग पोजीशन ले रहे हैं, हाँ, तो हमें कौन सा यूज कर, विच इज मोर प्रोमिनेंट और हेल्पफुल? पहले तो ऑल स्ट्राइक्स और एटीएम स्ट्राइक्स? पहले तो मैं तो कहता हूँ ऑल स्ट्राइक्स पे रहिए आप, काफी दिन के लिए सिर्फ ऑल स्ट्राइक्स यूज कीजिए। हाँ जी। ये बहुत इसमें थोड़ा ये ट्रिकी होता है, ये आपको ऑटो एडजस्ट करके करंट प्राइस पे, क्योंकि एट प्रेजेंट यहाँ पे जो चल रहा है वो सिर्फ यहाँ पे वो अब दिखे, ये जो प्रीवियस ये पूरा आप ये इग्नोर करना पड़ेगा आपको, और मार्केट यहाँ पे जो दिखा रहा है ना, यहाँ पे लास्ट में वही हाँ सिर्फ जी। आपको ये स्ट्राइक्स के लिए सिर्फ ये यहाँ पे जो है वही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये एनालिसिस सिर्फ यहाँ का दिखाता है, ये प्राइस पे क्या हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा ये जो यहाँ पे जो ये चेंज पूरा ये दिख रहा है आपको, तो ये पूरा मीनिंगलेस है ये चार्ट जब आप एक बार जब नियर एटीएम सेलेक्ट करते हैं। सो सिर्फ लास्ट का आपको यहाँ पे एट प्रेजेंट क्या चल रहा है सिर्फ वही आपको एनालाइज करना पड़ेगा। तो बहुत अलग है इसका एनालिसिस। तो आप सिर्फ ऑल स्ट्राइक्स पे रहिए, जनरली ऑल स्ट्राइक्स पूरा का पूरा मार्केट का दिखाता है, और ये पूरा बहुत काफी आप इस पे डिपेंड कर सकते हैं। Sir, can I add something to this, sir? Yeah. What I have experienced is that, sir, when the deep, when you are trading, अगर मूव कितना आने वाला है, मूव बहुत डीप आने वाला है, इट्स गोइंग टू बी लास्ट ट्रेंडिंग मूव, और इज इट गोइंग टू बी अ शॉर्ट मूव, हमको मालूम नहीं रहता है। सो अगर जो स्ट्राइक्स है, जो मार्केट मूव होता है, और हम लोग का एज अगर ये डिफरेंस है कॉल पीआई ओआई का, तो अभी बहुत डीप मूव आया है, कुछ बड़ा डीप मूव आने वाला है, तो यू विल सी दैट द इफ द मार्केट इज से on the upside, let us take the market is going to make a trending move on the bullish side, तो जो कॉल अनवाइंडिंग रहेगा वो खाली नियर एटीएम पे रुकेगा नहीं, जो दूर वाले कॉल्स है स्ट्राइक्स के वो भी भागेंगे। Exactly. So at that time if you are using all strikes, it is more confirmed, but that जो मूव रहेगा अगर वो डीप आने वाला है तो ही आपको कंफर्मेशन मिलेगा। So if you are not a scalper and you are capturing a 60, 70, 80 points, 90 points like a day trader, full दिन एक दो ट्रेड करके, so you can use all strikes. But अगर आपको 30-40 points को पकड़ने हैं और अगर आपने उसको all strikes पकड़ा, so the 30, 40, 50 points move will not be reflected so much in the all strikes because दूर के कॉल नहीं भाग रहे, मार्केट बुलिश है तो। So basically you can start with the near ATM strikes, and if the panic is visible कि नियर एटीएम स्ट्राइक्स में भी आपको डिफरेंस लाइन और पुट लाइन OI चेंज में कर्वेचर चेंज हो रहा है,
then you can switch over to all strikes and see if the panic is also going to the higher strikes. And if you see the panic is going to the high strikes also, so all strikes will also show you some change. So when the all strikes is showing change, you are confirmed that the deep is going to be a deep trend. How I look at it, sir, and how I use it. Okay, sure. Yes, thank you, sir. It all comes down to experience. Because once you have more experience, then you are ready to analyze what is going on near ATM, out of the money, in the money, how the OI is moving over there. So initially, I suggest go with all strikes, and then of course you have more experience with analyzing OI. Then you can move to near ATM and then deep in the money or out of the money and all that. इसको सर अगर आप रिलायंस पे देखेंगे ना तो बहुत अच्छा एग्जांपल दे, ये जो अभी जिन्होंने बोला ना एक्सप्लेनेशन, इट विल मैच वेरी वेल। ओके, क्योंकि लास्ट 2-3 दिन से बहुत तगड़ा हो रहा है। ओके, ठीक है, ओके सर, ये मैंने तो देखा नहीं है, तो श्योर। और एक श्रीकांत सर, बेसिकली क्या है, व्हाट आई एम सीइंग ऑल द क्वेश्चंस ओवरऑल, नो सर, the tools are there for your use, and if you know what is OI, the basic fundamentals of OI, you can use the tools, because every trader, sir, Srikant sir, you, me, and every trader will have a different flair and different understanding of the data. Very true, yes. So we cannot exactly pinpoint कि सब लोग एक ही देख सकते हैं, because हमारे पास data है, तो वो data को किस तरह से पढ़ना है, by knowing the basis of the open interest, unwinding, ये unwinding, you can make your own buffet, sir. The tools are there to help you. Yeah, very true. And all yeah. श्रीकांत जी, मैं वही just sorry to interrupt. No problem. आप जो चार्ट देख रहे हैं, मैं भी वही चार्ट देख रहा हूँ, पर मेरे चार्ट में रेड इज अबव ग्रीन और आपके यहाँ पे ग्रीन इज अबव रेड। अच्छा, आपका कलर अलग है क्या? हाँ, ये आप प्रोफाइल माय अकाउंट में आप जाके यहाँ से चेंज कर सकते, यहाँ से चेंज कर दीजिए। ओके सर। So actually we should refer with P line or C line instead of colors, फिर गलती नहीं होगी। Yeah, correct. Okay. So Srikant, yeah, I am Rakesh Agrawal here. Yes sir, tell me. हाँ श्रीकांत, मैं ये जानना चाहता हूँ टोटल PEC OI डिफरेंस जो आप बता रहे हैं ऑल स्ट्राइक पर, बट हम लोग जब ट्रेड करते हैं तो किसी सिंगल स्ट्राइक पे करते हैं, राइट? करेक्ट। हम या तो इसका कॉल या पुट बाय करते हैं या सेल करते हैं। हाँ। तो इसको अगर हम सिलेक्टेड स्ट्राइक पे, सिंगल स्ट्राइक पे अगर ट्रेड करना चाहें, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इसे 3 मिनट पे करें या 5 मिनट पर हम सिलेक्ट करें, और क्या अकॉर्डिंग टू कॉल और पुट, जैसा आपने कहा कि अगर कॉल का लाइन ऊपर जाता है, पुट का नीचे रहता है, और वीवेब के नीचे अगर मार्केट प्राइस रन कर रहा है तो हम उसको ट्रेड करें, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम अगर बैंक निफ्टी पर ट्रेड कर रहे हैं तो हम सिंगल सिलेक्टेड स्ट्राइक में अगर हम सिंगल स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करें और 5 मिनट चार्ट को सिलेक्ट करें, तो क्या वो ट्रेड सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं? हाँ, जरूर, डेफिनेटली। करके दिखाएं एक बार मुझे जरा प्लीज। एक सिलेक्टेड प्राइस में बैंक निफ्टी को प्लीज। सिलेक्ट प्राइस मैं एक करूंगा बैंक निफ्टी को, यस। अब उस दिन क्या था, अराउंड 35.9 का लेते हैं, अप्रॉक्स 500 और 700 का करें। कौन सा सर? 35 700 35.7, यस। ये आपको अराउंड यहाँ पे आपको बेरिश सिग्नल हुआ, यहाँ पे मिला। हाँ, ओके, तो ये भी चलता है, ये आप कर सकते हैं डेफिनेटली। तो श्रीकांत जी, इसमें दो चीजें मैं पूछना है। एक तो ग्रीन और रेड का क्रॉस ओवर है, राइट? हाँ। नंबर 1 रेड और ग्रीन का कॉल और पुट का क्रॉस ओवर है। हाँ। नंबर 2, यही रेड ने वी वेब को भी क्रॉस किया है ऊपर, तो हाँ। ट्रेड हमें कहाँ एग्जीक्यूट करना चाहिए, जहाँ कॉल और पुट का क्रॉस ओवर है, या वी वेब के साथ भी क्रॉस ओवर हो जाए? नहीं, वी वेब तो चाहिए सर आपको, वैसे भी इसमें तो वी वेब सुबह से ही नीचे ही था प्राइस वी वेब के, मगर आपको, और फिर आप यहाँ पे ये एक डिफ, ये OI चेंज डिफ भी आप डाल दीजिए, क्योंकि ये आपको इनिशियली यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, एक्चुअल क्रॉसओवर यहाँ पे हुआ, लेकिन आपको इंडिकेशन यहीं पे मिल गया था। 57 से आपको ये डिफरेंस नीचे था। ये डिफरेंस का मतलब है कि यहीं से कॉल OI स्ट्रॉन्ग होना चालू हुआ है, यहाँ से और एक्चुअल क्रॉसओवर यहाँ पे। ओके,
तो यहाँ से आप इनिशिएट कर सकते हैं आपको चाहे तो, क्योंकि यहाँ वीवैप के नीचे यहीं से था, तो इनिशिएट यहाँ पे इनिशिएट करके यहाँ पे आप और एक ऐड कर सकते हैं, थोड़ा पोजीशन इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे आप, but sir, VWAP is only for the price, no? Price line, not for OI or put. It's for price line, yeah. So we are talking about price only, price with respect to sir, VWAP. Second, sir, the person who asked the question, I think he was referring to the crossover of the OI with the VWAP. So no, really? The clarification given by the next person is right. I also thought the question was, he was referring to the crossover of the red line, that is the call and the OI or the put OI. Okay, no. Yeah, VWAP is only for price line. I am talking about the crossover of call and put OI change, because see this price and OI, this is the axis, and for OI this is the axis, so they cannot cross over at any time. I mean, one is 5 lakhs, it's in lakhs, and this is in some thousands, so there is no question of crossover of OI and VWAP. So just you can keep that out of the mind. I mean, don't even think about that. So ये जो VWAP और price crossover हो सकता है, लेकिन ये call और put lines का crossover VWAP से नहीं हो सकता है. In this graph, what I understand, sir, can I add it? 2 minutes, 1 minute? Yeah. That 2-3 things we have to see. First is VWAP and market price. Yeah. How many times it is crossing or not crossing? That is one crossover. Second crossover is between green and red line. That is call OI change and put OI change. So वो कब change हो रहा है? हुआ dominant player sentiment किस तरफ है वो होगा. And एक last में ये आपने जो लगाया OI difference. So it is whether negative or positive. ये और ये साथ में एनालिसिस इसका होता है. ये कॉल और पुट OI चेंज और डिफ, इसका एनालिसिस साथ में होना चाहिए. और ये 3 लाइंस जो है टुगेदर इसको एनालाइज कीजिए, और फिर प्राइस एंड VWAP तो अलग होता है. And I have seen many times even if call writers are dominating, but price might not decline. Yes, so, that also happens many times. Yes, and that you will see with scripts. If you see, many people have asked me about HDFC Bank. If you see, most of the time it just does not work. It runs always counter. If you see all strikes, it's always okay. In this case, today, last Friday it worked. You'll see many times what happens is this is exactly opposite. Like if call line is above, price will just be going up and trending up. So you will see this. It is very, very confusing. And many people. मैं मदरसन सुमी में फंस गया सर इस चक्कर में. Okay. Shrikant ji, one query. The bank Nifty 35,700 call and put. If you look under price OI, you get 2 graphs. How do you read that? Price versus OI. Bank Nifty. Price versus OI. हाँ. अब आप इसको हमने वही स्ट्राइक ले लिया 35,700. Okay. एक पुट है, एक कॉल है. हाँ. See, generally इसमें analysis this the most popular analysis. You need to if you are a buyer, option buyer. If you are an option seller, there is no issue. If price is below VWAP, you can short here as long as the open interest is rising. So price is below VWAP, and open interest is rising, writers are active. So you are writing here. Now, if you are a buyer, once open interest starts to fall, you should be looking to buy, but only if price is above VWAP. So here, this is out of the question here. In this case here, price is rising, but price is above VWAP. So definitely, I mean, you can definitely write. I mean, if this is going up, right, but it is not below VWAP, so you cannot write the option, this particular option. So it is you can actually buy the option when OI starts falling. This is your buy point. This is your buy point. So this is the kind of analysis that is standard over here. For buyers, I mean, this you can keep this open, and
main prerequisite is that first condition is that you need a big change in OI, huge change in OI, and if the price of the option is above VWAP and OI starts falling, your buy. This is your buy point. This will work most of the time. And of course, here the same setup is there here for a huge increase in OI. OI starts to decrease, but price is not above VWAP, so you don't buy this option. There is no trade here. There is a trade here. And exactly opposite here, short trade is there, but here short trade is not there. OI is increasing here, price is below VWAP, you have a short trade. Here short trade is not there because OI is increasing, but price is above VWAP. Okay. और जो नीचे वाला ग्राफ है that is implied volatility. Implied volatility actually ये मेरे ख्याल से next update में ये भी इसको ऊपर कर देंगे हम लोग. इसके पहले भी था. ये अगर ऊपर हो तो इसका एनालिसिस बेटर होता है क्योंकि ये इसका चार्ट बहुत ठीक से दिखेगा. वो कैप्चर नहीं होता माइंड में. हाँ बराबर है एग्जैक्टली. तो ये ऊपर नेक्स्ट अपडेट में जाएगा सर. ये भी मेरे ख्याल से बीटा में है लेकिन अभी ऊपर नहीं गया है बीटा में. इसको भी ये ऊपर चला जाएगा. ये और बेटर रहेगा इसमें आईवी के साथ. The total sir, the same screen I can. Yeah. सर OI डिफरेंस और OI चेंज डिफरेंस में क्या सर वो है डिफरेंस क्या है सर दोनों में? एक मिनट. हाँ ये इस पे किसको और एक कोई पूछ रहा था. ATP क्या होता है सर इसमें? ये ATP मतलब VWAP. ATP जो डेटा फीड से आता है हम लोग इसको नेक्स्ट अपडेट में ये भी VWAP कर लेंगे. कंफ्यूज हो जाता है. VWAP है बेसिकली. Sir, this same Srikanth sir, this same screen which you have this OI chart. Yeah. Not considering the IV and the PCR, the same screen I can create in the futures beta chart, no? With the price, with the OI and the VWAP. Yeah, you can same. Yes, you can do that. I can create that, sir. इसमें ये option आ सकता है कि this screen, if I want to switch to look at only the call and only the put, means the whole screen will occupy the same structure, but only the call on a big scale. That can be done, sir. We can actually do that. We can probably have some kind of a checkbox here. So optional display whether you want to display this or not. Yeah, it can be done. Yeah. But yeah, this is a lot better done in this chart. I think now you can have big chart, small chart, and So price versus OI multiple वाले में आ जाएगा. हाँ इसमें multiple आ जाएंगे काफी. हाँ बराबर. Price versus OI multiple. Once the futures beta chart is there in trading view with the OI option, I think that will be a better option for people like me who are using this price versus OI. No, on a bigger scale, I can look at the same data. Yes. Now this is already available, so you can the beta, so you can use it. Yes. Right. Sir. Okay. Somebody was asking about OI change or something like that. Yeah. Sir, OI change difference और OI difference के बीच में क्या सर differences हैं दोनों के बीच में? OI diff और OI change diff. जी सर जी. ये OI diff मतलब कॉल ओपन इंटरेस्ट और पुट ओपन इंटरेस्ट और कॉल ओपन इंटरेस्ट का डिफरेंस. ओपन इंटरेस्ट का डिफरेंस है ये और ये हाँ टोटल ओपन इंटरेस्ट उसका डिफरेंस है. ये तो OI चेंज का डिफरेंस है यानी कि मॉर्निंग. सर एक बार बैंक निफ्टी लगाइए सर. हाँ सर इसमें जो सर अभी आपने एग्जांपल बताया था कि वो नीचे अगर आप देखते तो आप पहले पकड़ लेते, वो वाला सर एक बार मिल जाएगा क्या? हाँ वो मेरे ख्याल से सेलेक्टेड स्ट्राइक में था वो. एक मिनट अभी वो स्ट्राइक सेलेक्ट करता हूँ. जी 700 ये वाला था शायद वो. नहीं ये नहीं था और कुछ और था. नियर एटीएम था क्या? ऑल स्ट्राइक पे बता दीजिए सर. ऑल स्ट्राइक्स था शायद. नहीं ये तो सुबह से ही पूरा नेगेटिव था. मुझे याद नहीं आ रहा है वो कुछ और दिन था या फिर नियर एटीएम था शायद. नहीं नियर एटीएम भी नहीं था वो. क्यूमुलेटिव में था क्या वो? नहीं क्यूमुलेटिव इसी में था वो. इसी में था शायद. कुछ और स्ट्राइक्स थे क्या इसमें? क्योंकि वो हाँ मेरे के सर आपने वो OI diff ऑन नहीं किया है. OI diff हाँ राइट OI diff यहाँ पे.
ये OI जो था वो नेगेटिव था, यही यहाँ से ही नेगेटिव हो गया, वो 10 बजे से ही नेगेटिव में था OI। सर तो इंट्राडे के लिए सर ये मोर रेलेवेंट है कि OI चेंज का डिफ रेलेवेंट है? जनरली OI चेंज का डिफ माना जाता है, क्योंकि OI तो पोजिशनल के लिए बेटर रहेगा। ये ठीक है, ये तो लेकिन ऑलमोस्ट एक ही साथ OI चेंज का डिफरेंस तो एक ही साथ चेंज होगा, क्योंकि ये तो ये दोनों का डिफरेंस है। तो OI भी आप रख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है, जनरली OI तो थोड़ा डिलेड देता है, क्योंकि ये जनरली बहुत पूरे के पूरे ओपन इंटरेस्ट का होता है, तो इसका थोड़ा स्लो होता है इफेक्ट। ये जो इसके सिग्नल्स थोड़े स्लो होते हैं, पोजिशनल के लिए ज्यादा वैलिड होते हैं ये सिग्नल्स। इंट्राडे के लिए चेंज ज्यादा रेलेवेंट, इंट्राडे के लिए चेंज ज्यादा इंपॉर्टेंट। करेक्ट। तो वो अर्ली सिग्नल सर वो पहले येलो लाइन दे रही है। हाँ दे, क्योंकि यहीं से उसका स्लोप तो नीचे चला गया है, लेकिन एक्चुअल ये तो एक ही साथ देता है, क्योंकि इसी का डिफरेंस है ये। तो ये लाइन इसी के साथ ही सिग्नल देगा, एग्जैक्टली सेम टाइम पे देगा ये सिग्नल बेसिकली। सर इसका डाटा दिखाइए तो ऊपर में थोड़ा, वहां पे आप कैसे, मतलब आप अगर पोजीशन लेंगे तो कहाँ पे लेंगे, माइनस जो होता है ना इसका, तो वो अनवाइंडिंग आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे अनवाइंडिंग हुआ है। ये जो परसेंटेज वाला होता है, ये भी एक बार देख लेता हूँ, 1 मिनट। ये जो बैंक निफ्टी था, सिंगल स्ट्राइक वाला लेते हैं। स्ट्राइक अनवाइंडिंग इसमें यहाँ पे चालू है। सिंगल स्ट्राइक पे ये आपको परसेंटेजेस भी कम दिखेंगे, थोड़ा अनवाइंडिंग भी हो तो काफी हो जाता है। अब ये आपको देखना पड़ेगा कि हर कितना अनवाइंडिंग सिग्निफिकेंट होता है। ये तो काफी सिग्निफिकेंट है यहाँ पे 1030, लेकिन इसके पहले मेरे ख्याल से ये भी सिग्निफिकेंट है। थोड़ा क्लू यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे तो 1% के ऊपर तो काफी बड़ा सिग्नल हो जाता है। ये यहाँ पे वार्निंग है, सेम ये भी वही दे रहा है। नहीं, मेरा कहने का मतलब वो जो क्रॉसओवर हुआ है, हाँ, जो कॉल और पुट का, उस टाइम वो सिग्निफिकेंट कितना है, मतलब वो शायद 12 बजे या 12:30 बजे हुआ। कौन सा? नहीं, वो तो 10:45 पे हुआ था। हाँ 10:42, हाँ वहां पे देखिए, हाँ 10:45 पे वो जो है आपको उसके बहुत पहले मिल गया सर। यहाँ पे जो है 10:27 को बड़ा सिग्नल था, ये 1.75% अनवाइंडिंग हुआ, यहाँ यहीं पे था। यहाँ पे तो 39:42 पे हुआ, ये 45 पे आपको क्रॉसओवर हो गया यहाँ पे। सर अभी OI इंट्राडे में जाएंगे, 35,700 सिलेक्ट करेंगे। कहाँ पे? सॉरी सर OI इंट्राडे जो देखते हैं ना ऑप्शन का, OI इंट्राडे इंट्राडे ब्रेकअप, ये वाला। हाँ 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 यस, वो सेम डालो इस पे। हाँ सेम 35,700 35,700 ये कितना मिनट? 3 मिनट्स 15 मिनट्स। 15 तो आप मिनट्स। यूजुअली 15 मिनट्स बोलते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, सिग्नल के लिए तो 15 मिनट्स। ये आपको 10:15 पे इनिशियल सिग्नल था, इनिशियल शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पे। हम तो सर पहली बार नहीं लेंगे, सेकंड में लेंगे, तो 10:30 को अगर नहीं, सेकंड पे नहीं, क्यों? ये 10:15 यहाँ पे क्लोज हो गया है। ये आपको सिग्नल 10:15 पे आ गया है। अच्छा, तो लेकिन उसके बाद आपको ऑप्शन, ये जो ऑप्शन है 35.7, ये ऑप्शन चार्ट में जाना पड़ेगा अच्छा 10:15 के बाद, और 10:15 के बाद देखना पड़ेगा आपको कि आपको आया है या नहीं। आप यहाँ पे जाके निफ्टी ऑप्शंस, ये तो 22 शॉर्ट जो है, कॉल में शॉर्ट था। कॉल में शॉर्ट अगर करना है तो ये
इस पे आपको 1040 पे ही आया है ये तो सिग्नल। आप 2 मिनट सुपर ट्रेंड अगर आप यूज करते हैं इसका तो 1040 पे ही आया है। आपको सिग्नल यहाँ पे 1015 पे ही आ गया था लेकिन फिर सर जैसे कि ठीक है शॉर्ट बिल्डअप हुआ 3 कंटिन्यूस हुआ, उसके बाद लॉन्ग बिल्डअप भी आया, उसके बाद शॉर्ट बिल्डअप, तो उसके बाद 11 बजे आया वो 11 बजे। उसके पहले आप ट्रेड के अंदर अगर मैं है। ट्रेड में हूँ, हाँ अगर मैं ट्रेड में हूँ तो ट्रेड में है तो आपको ये लॉन्ग सिग्नल यहाँ पे आया ही नहीं। अच्छा आप ग्रीन तभी एंटर करेंगे ऊपर में जो ग्रीन आता है सुपर हाँ ट्रेंड। ये आप 11 बजे आप यहाँ पे चालू करेंगे ये देखना। 11 बजे के बाद आपको बाय सिग्नल आया ही नहीं यहाँ पे। अच्छा तो आप यही ट्रेड में इसी ट्रेड में रहेंगे आप, शॉर्ट ट्रेड में ही रहेंगे आप। तो अगर उसका उल्टा अगर दिखाएंगे थोड़ा, जो चार्ट लिए हैं आप, जो चार्ट में जाइए, उसका अगर पुट लेंगे तो 35,700 पुट। हाँ एक मिनट, पुट लेंगे तो आपको बाय 1040 पे बाय आया है। ओके। और उसके बाद सेल आया ही नहीं। ठीक है सर। तो सेम रहेगा। आप यहाँ पे बाय ले लेंगे आप तो यहाँ पे सेल नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया, इसके बाद आपको सेल मिला ही नहीं। आप ओके सर, थैंक यू। ओके। हेलो हाँ के बारे में बताओ ना। हाँ सर श्रीकांत सर जी। सर इंडिया विक्स और निफ्टी का चार्ट ऐसा इंक्लूड नहीं हो नहीं सकता है क्या सर? सर विक्स हमारे पास कैश डेटा नहीं है अभी, आगे लेंगे हम लोग। तो एट प्रेजेंट अच्छा। तो विक्स हम लोग दे नहीं सकते क्योंकि हमारे पास है नहीं डेटा उसका। तो आईवी देख सकते हैं आप। आईवी आप हमने मल्टी स्ट्राइक ओआई में आपको आईवी दिया है। तो ये आप समझो ये मैं डिसेबल कर देता हूँ। सिलेक्टेड स्ट्राइक्स में आके इसको ये जो येलो पीला कलर का लाइन है वो आईवी है। तो ये आईवी आपको ऑलमोस्ट विक्स के जैसा रहेगा क्योंकि इसी पे बेस्ड होता है विक्स। अच्छा इस पे बेस्ड रहता है इंडिया विक्स? हाँ इंडिया विक्स ऑप्शंस पे निफ्टी के ऑप्शंस पे बेस्ड है। तो आप ये आप यूज कर सकते हैं उसी के ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा। और ये आप एट द मनी स्ट्राइक जाइए बेटर रहेगा। तो एट द मनी वाला स्ट्राइक होता है वो आप सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे जो दिखाएगा ये आपको कोई भी स्ट्राइक रहेगा तो भी आपको एट द मनी का ही दिखाएगा। सॉरी, तो एट द मनी सेलेक्ट करना नहीं पड़ेगा। बट ट्रेडिंग व्यू में इंडिया विक्स सिंबल अगर आप लगाएंगे तो आप चार्ट देख सकते हैं। हाँ क्योंकि ये हमारे ट्रेडिंग व्यू चार्ट में डेटा हमारा है, आपका नहीं है। हाँ तो ये सिर्फ सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग व्यू का है, मगर ये डेटा हमने जो हमारा 1 मिनट का जो एनएससी का फीड है उससे आता है। यस। तो आगे हम लोग ऐड करेंगे। अदरवाइज फ्री में भी आप ट्रेडिंग व्यू को देखेंगे, फ्री वर्जन, और हाँ, एक उसमें सिंबल देख सकते उसमें आप डालेंगे इंडिया विक्स, यू कैन सी दैट करेक्ट। अनदर चार्ट उस दूसरा उसमें tradingview.in वो जो भी है। बराबर है, करेक्ट। ट्रेडिंग व्यू साइट पे आप जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। करेक्ट। ओके ओके थैंक यू। ओके। सर बैंक निफ्टी का आईवी दिखाना। बैंक निफ्टी का आईवी ओके ये हेलो हाँ ये बैंक निफ्टी का आईवी है। ये जो येलो कलर का है, पीला कलर, पूरा का पूरा फुल डे ऊपर ही जा रहा था क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा था, आईवी बढ़ता गया। सर ये इंडिया विक्स मंथली के लिए बराबर रहता है ना? मंथली ऑप्शन इंडिया विक्स मंथली समझा नहीं क्या क्वेश्चन। मतलब वीकली ऑप्शंस के लिए हम लोग ये आईवी देख सकते हैं और इंडिया विक्स मंथली के लिए। हाँ वैसे देखिए, नहीं आप ये जो भी आप अगर ये जब भी देखेंगे तो ये आपको बराबर ही दिखाएगा। ये नियर ये वीकली का रहेगा। और ये आप अगर ये मंथली सेलेक्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से मंथली का दिखाता है, ये पता नहीं, मुझे याद नहीं है, टीम को पूछना पड़ेगा। ये शायद आप ये मंथली और आप एक्सपायरी सेलेक्ट करेंगे तो ये मंथली आईवी दिखाएगा, शायद ये कंफर्म करना पड़ेगा मुझे, मगर आप देख सकते हैं मेरे ख्याल से अलग रहेगा ये। सर हाँ सर अभी आपने जो चार्ट दिखाया था उसमें आपने जो बिल्टअप दिखाया था, शॉर्ट बिल्टअप, लॉन्ग बिल्टअप, और चार्ट में आपने 2 मिनट पर सुपर बिल्टअप का शो किया था, राइट? हाँ राइट। तो क्या सुपर बिल्टअप को सुपर ट्रेंड को हमें
हाँ, सुपर ट्रेंड को हमें 2 मिनट पर रखना चाहिए या हम 5 मिनट फॉलो करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्या होगा? हाँ, कौन कर सा सकते बेहतर? हैं, कर सकते 5 हैं, मिनट बस करके थोड़े दिखाएंगे। और फिल्टर हो जाएंगे, सिग्नल थोड़ा लेट मिलेगा, लेकिन आपके थोड़े विपसॉस फिल्टर हो जाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत क्लीन डे था, ये बहुत ट्रेंडिंग डे था, तो इसके ये जो पहले बहुत हाँ दिक्कत आ रही हाँ है, हाँ बराबर, बार तो ये सुपर आप ट्रेंड चेंज हो रहा है। अगर 5 इसको मिनट 5 मिनट करें सर, हाँ हाँ चलेगा, आप देख सकते 5 मिनट, हाँ मेरे ख्याल से थोड़ा सा ठीक होगा। आ नहीं रहा है, हाँ नहीं रहा, 1 मिनट आना तो हाँ, ये आ गया। हाँ, थोड़ा डिलेड रहेगा सिग्नल, लेकिन ठीक है, बराबर ही है, आप कर सकते हैं, आपका प्रेफरेंस है। या तो भी इस पे ना सर, इसमें कॉल या पुट का बाय पर या सेल पर 20 से 50-75 पॉइंट तो मिल ही जाएगा। किसी भी कैंडल पे ट्रेड करेंगे, 2-4 कैंडल पे 3 या 4 ट्रेड एक साथ अलग अलग प्राइस पे लेंगे तो आई थिंक अच्छा सा प्रॉफिट मिल सकता है। 50 पॉइंट से ऊपर तो मिल ही सकता है। राइट, थोड़े बाइंग में तो थोड़े विपसॉज आते हैं, तो आपके स्टॉप्स बराबर होने चाहिए बस, वरना आप कैप्चर तो कर सकेंगे। आपका आइडिया ये रहेगा कि ऐसे बड़े ट्रेड्स थोड़े कैप्चर हो जाएं, बस जनरली वो एम होता है। इसके अलावा सुपर ट्रेंड के अलावा भी इस पर कोई और मूविंग एवरेज या कुछ इसके सपोर्टिंग में RSI कोई भी ट्रेंड का इंडिकेटर चलेगा, कोई भी ट्रेंड का इंडिकेटर जो हम एनालिसिस करें। जस्ट लाइक आई एम आस्किंग अबाउट द कंफर्मेशन ऑफ दिस सुपर ट्रेंड, कि अगर सुपर ट्रेंड को कंफर्म करना है तो इसके साथ ऐसा कौन सा सपोर्टिव एक और इंडिकेटर लगा ले, मूविंग एवरेज लगा ले या RSI लगा ले या कुछ और लगा ले जो कर सकता है? कुछ आप बता सकते हैं? मुझे अवॉइड कीजिए सर, ज्यादा इंडिकेटर्स अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये सिंपल सिंगल ट्रेंड इंडिकेटर बहुत हो जाता है, क्योंकि आप और इंडिकेटर्स ऐड करने से क्योंकि अगर 2 ट्रेंड इंडिकेटर हो तो फिर सिमिलर इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस आएगा तो वहां पे और सिर्फ कंफ्यूजन ऐड हो जाएगा। तो अभी ये मैं केल्टनर चैनल ऐड करता हूँ, ये भी ट्रेंड इंडिकेटर है, आप ये देखेंगे, फिर आप इसको जाके आप अगर ये तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया केल्टनर, हाँ सर, ये बॉलिंगर बेंच जैसा दिखता है सर। हाँ बस, लेकिन ATR बेस्ड है, सिमिलर रहेगा, बस ये ऊपर का बैंड ब्रेक करने से सिग्नल आता है, बेसिकली ट्रेंड का, ऊपर के ट्रेंड का, नीचे का ब्रेक करने से नीचे का साइड का आ जाता है, तो बेसिकली सिमिलर होता है। बेसिकली आप ये अभी आप ट्रेंड जो है, आइदर आप सुपर ट्रेंड यूज कीजिए या केल्टनर चैनल यूज कीजिए या कोई और मूविंग एवरेज ऐड कीजिए, से मूविंग एवरेज डबल ऐड करते हैं, और यहाँ पे मैं थोड़ा 34 को प्रिफर करता, 5 मिनट पर तो कैसा है 34 विदाउट क्रॉस ओवर नहीं सर, सिंगल मूविंग किस मूविंग एवरेज, सिंगल मूविंग एवरेज 34 का। हाँ ठीक है, 34 का एक मिनट, हाँ ये 34 है या कौन सा, ठीक है, 1 मिनट। Yes, ये मूविंग, yes हाँ, कोई भी ऐड कर लीजिए, चलेगा, कोई भी सपोर्टिंग हो गया एक यूज ही है, कंफर्मेशन के लिए यूज मत कीजिए, कोई भी आप मूविंग एवरेज यूज करना है तो फिर बाकी सारे ट्रेंड इंडिकेटर्स बंद कर दीजिए, क्योंकि क्या है, फिर आपके सिग्नल्स एक से रहेंगे आपके हर एक ट्रेड में, तो आपको इसके एनालिसिस का आपको एक्सपीरियंस ज्यादा आएगा। तो ये 2-3 इंडिकेटर से सिर्फ कंफ्यूजन ऐड होगा, सिर्फ ये रख लीजिए, चलेगा, बस सिर्फ ये रख लीजिए, ये भी ऐसे भी चलेगा, बस ठीक है सर। ओके सर CPR थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? CPR सर एक्चुअली ये रिसेंटली ऐड किया है, मैं खुद टेस्ट कर रहा हूँ इस पे, पिवट्स का ये होता है, और ये इसमें इंडेक्सेस के लिए बताऊँ, 1 मिनट। हेलो, हाँ 1 मिनट। CPR का जनरल कॉन्सेप्ट मार्केट में ऐसा है कि अगर CPR के ऊपर प्राइस है तो वो पॉजिटिव है और CPR के नीचे है तो नेगेटिव है, ऐसा कॉन्सेप्ट मार्केट में चल रहा है। करेक्ट है, वो वैसे ही होता है। इसका सेटिंग क्या है सर? सेटिंग कुछ नहीं होता है CPR का, वो प्रीवियस तो ये जैसे आपके इसमें डॉटेड लाइन आ रहा है 1 दिन का, फिर दूसरा, हाँ वो तो मैंने सिर्फ यहाँ पे जो है ये सर्कल सेलेक्ट किया है। अच्छा, जो आप लाइन सेलेक्ट करेंगे तो लाइन हो जाएगा। हाँ वही ओके। हाँ तो बस इसीलिए ये अलग अलग आपको ये डॉटेड लाइन दिख रहा है। हाँ बस,
तो ये बस ये जब जैसे ये करंट डे के ऊपर होता है तो बुलिश होता है। मैं तो दो चेक करता हूँ, तो करंट डे और प्रीवियस डे के ऊपर जब होता है तो फिर बुलिश होता है, ऐसे मैं चेक करता हूँ। आप वो डिपेंड करता है। आप एक बेस्ट एक वो जो एक बुक है मेरे ख्याल से, सीक्रेट्स ऑफ पिवट बॉस, मेरे ख्याल से अच्छा का नाम है, वो सबसे बेस्ट बुक है पिवट्स के लिए, और उसमें इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है एनालिसिस से, सीक्रेट्स ऑफ पिवट बॉस। सीक्रेट ऑफ पिवट बॉक्स। हाँ मेरे ख्याल से 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, हाँ मैं अमेज़न पे देखता हूँ। By Frank Ocha. Oh, yeah. हाँ राइट वही है। Channel also there. Frank Ocha, Secrets of Pivot Boss. हाँ पीडीएफ में भी सर्च कर सकते हैं। हाँ हाँ ये बुक है, इसमें पूरा का पूरा बहुत डिटेल में दिया है इसमें सीपीआर के बारे में, और बहुत एक्सलेंट बुक है ये पिवट्स के लिए। तो अब ये देख लीजिए, इसमें ये पूरा डिटेल में मिलेगा आपको इन्फॉर्मेशन, बेटर है। ओके Sir, do you have different OI quadrants? OI, sorry, different OI? OI quadrants, long build up, short build up, different OI quadrants. I think, is this about the scripts that are in the build up, you mean? This way? Long build up, short scripts in long build up, scripts in short build up. Is this what you say? Yeah, exactly. Yeah. So this you can, yes, check under OI build up. Is it available for Nifty and Bank Nifty? No, I mean, this is for all scripts. So you somewhere Bank Nifty and Nifty is going to be, Nifty is there over here. Okay. So you can take a look. I mean, we have, are you talking about separate Bank Nifty stocks and all that? Strike wise, I'm asking. Oh, strike wise quadrant, this way, it's not there actually. No, not there. That's a good idea actually. I'll note it down. But currently it is not there. Okay, strike wise, if you give it, it's very, we can gauge the trend immediately. Okay, sure. Please. I'll plan on it. Yeah, surely. Good idea. एक सर, और ये सिंबल जितने भी है उसको हाइपर लिंक करेंगे तो चार्ट खुल सकता है सर। हाँ, ये पेंडिंग है सर, करेक्ट। ये सब जगह बहुत इसमें पेंडिंग है, तो ये करना है हमको। तो वो जस्ट क्लिक करते ही चार्ट खुलेगा तो थोड़ा इजी रहता है। राइट, करेक्ट सर, करेक्ट, ठीक है, करेंगे सर। श्रीकांत जी, कैटल चैनल पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दीजिए ना सर। किसका? सॉरी, कैटल चैनल? हाँ जी। ओके, उसके वेरियस components and how to understand this chart. Basically, what I do is the basic concept is if it has closed below, I mean, you see this falling upper line. If market is going down and the upper line keeps falling, and once the lowest point of this falling line, upper line, yes, if the price closes above that, so that is this bar, then this I usually consider it to be the break of this short downtrend. So, and for me, then from here there is an uptrend going on. So I use this for adjustments also, adjustments of butterflies, adjustments of spread positions. So basically, once I get uptrend signal on this, some kind of 15-minute chart or so, then I usually tilt my delta, or if I am too negative, I'm holding too negative delta, then I either neutralize it or make it slightly positive after I get this kind of a signal. Then I continue until I get a bearish signal here. This now price is going up, and here this lower line is going up and up. And once the price closes below this highest point, for me here, I again neutralize the delta. Or if I think the price is going to go further down, then I even go a little bit, change it to negative, slightly negative delta. Generally, it is good to just neutralize the data here, get it to delta neutral if you're trading butterflies and all that. And then once you get another confirmation, you can change it to positive here. So something like this happens, then you are not too negative
you don't are not too negative, and when the next day the price opens above, it breaks above the upper line. So neutralize first, make it delta neutral, and then on another confirmation just go negative or positive in this case. Sir, So basically, yeah. For 5 minutes, what are the conditions, sir? KC? What are the 5 minutes? What are the conditions? It is just the same. Nothing. Okay. It is going to be the same. You'll just the thing is you'll get faster signals. So Okay. if you are trading like a very heavy position, or where you want to capture faster signals, then you would probably get into 5 minute, or even probably into trading intraday even into 1 minute. But if you're in positional, then it does not make sense. You can probably go to 15 minutes or probably even more. So it depends. If you're into monthly option trades, then probably even 75 minutes or 60 minutes or whatever, hourly chart or whatever. So positional trades, I think this will be a lot more better if once continuous charts are there. So it all depends. I mean, the Keltner channel, I use 50,3. So this is the same settings, but I only change the time frame based on whether my trade is an intraday or a positional. I just change the time frames. For positional, actually, I use 15 minutes. So especially for butterfly trades, I'm just mostly neutralizing the delta based on these signals. So I do it based on this. So you can do it based on anything. I mean, people. A friend of mine does it based on CPR also. So it all depends. If you want early, there are probably earlier signals in this. So you can, or maybe late signals. It all depends. It all depends. Shrikant sir, Shekhar here. इसमें सर निखिल गुप्ता की जो स्ट्रैटेजी है ना, स्ट्रैडल सेल, उसका कोई वेरिएंस यूज कर सकते हैं क्या? केसी चैनल या फिर ओआई डेटा देख के? हाँ, अच्छा आपने क्या मुझे मैसेज किया था? यस राइट. सो वो जो निखिल गुप्ता का स्ट्रैडल का स्ट्रैटेजी है, तो वो अभी आपको उसमें एक चीज क्या है कि हर एक दिन के लिए एक अलग पैरामीटर होता है कि आपको इसमें एडजस्टमेंट कहाँ पे करना है. सो अब अगर मैं बैंक निफ्टी में जाऊं और बैंक निफ्टी में 5 मिनट में जाऊं और ये मैं ये कर देता हूं. अब आप समझो आपने यहाँ पे कहीं स्ट्रैडल इनिशिएट किया है, तो एक तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जो अफेक्टेड साइड है, अफेक्टेड साइड मतलब प्राइस जिस साइड पे जा रहा है वो साइड पे आपका रिस्क बढ़ जाएगा और आपका एसएल हिट हो जाएगा. तो आप एसएल का आपका कहाँ पे हिट होगा और वो उस साइड का पोजीशन आप कहाँ क्लोज करेंगे, तो वो उसका पैरामीटर आपको डिसाइड करना पड़ेगा. अब ये आप बहुत अलग अलग ये है. आप निखिल गुप्ता जो बताते हैं कि वो आप पूरा का पूरा जो स्ट्रैडल होता है, मैं स्ट्रैडल भी एक ओपन कर लेता हूँ. ये बैंक निफ्टी कहाँ पे था? 20 अराउंड 35.9 पे था. मैं स्ट्रैडल चार्ट 35.9 का ओपन कर लेता हूँ. हाँ, ये आप एक आइडिया ये है कि आप जब भी केल्टनर चैनल आप प्लॉट कर लीजिए 1 मिनट स्ट्रैडल चार्ट पे, और यहाँ पे जब अपर लाइन के ऊपर जब क्लोज होता है, ये एक आइडिया है. यहाँ पे आप पहली बार जो है अफेक्टेड साइड आप एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि क्लोज करना पड़ेगा, पुट साइड क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है पुट यहाँ पे अफेक्टेड है. तो यहाँ पे 1040 के बाद यहाँ पे आप क्लोज कर सकेंगे पहली बार पुट का साइड, और कॉल आप होल्ड करेंगे. अब ये कॉल आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे आप कॉल को क्लोज करके आप स्ट्रैडल री इनिशिएट करेंगे. तो उसके लिए वो सुपर ट्रेंड बताते हैं. सुपर ट्रेंड जो है 10,1 या 10,2. 10,1 अगर देखेंगे तो अब ये इमीडिएटली आपको यहीं पे आ जाएगा. यहीं पे आप वापस 35.8
का स्ट्रैडल आप वापस रीइनिशिएट करें। तो अब ये जो है ये आपको कंडीशंस आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे वेरिएशंस हैं इसमें। अब एक आइडिया आपको ये है, यहाँ पे आप यहाँ पे आप क्लोज कर सकते हैं पुट वाला। यहाँ एक बार आपको ये ट्रिगर जब आएगा तो आप जाके आप देख सकते हैं कि किस तरफ पे आपका रिस्क है। तो ये यहाँ पे आप ऑब्वियसली पुट साइड का रिस्क है, पुट क्लोज कर दीजिए, कॉल होल्ड कीजिए। कब तक कॉल होल्ड करेंगे? जब तक आपका ये वापस इसके नीचे ना जाए। एक ये मेथड है। दूसरा मेथड आप ऑप्शन चार्ट्स पे भी जा सकते हैं। ऑप्शन, क्योंकि आपका रिस्क वो टाइम आप नेकेड ऑप्शन कॉल आपका शॉर्ट है, तो अब जो कॉल आपका शॉर्ट है, तो कौन सा था वो 35.9 कॉल आपका शॉर्ट होता है। तो आप इस पे आप सुपर ट्रेंड 10,2 लगा सकते हैं या 10,3 भी लगा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ऑप्शन का चार्ट है ये आपका। तो ये मेरे ख्याल से 10,3 नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पे आपने शॉर्ट किया है कॉल, और यहाँ पे ये पॉइंट पे जब आपका कॉल सिग्नल देगा, यहाँ पे आप 1240 पे जो है 1240 पे आप जाके ये देख सकते हैं अब वापस जो भी प्राइस है इसका 1240 सॉरी मुझे बैंक निफ्टी पे वापस जाना पड़ेगा। 1240 पे यहाँ पे 35,755 है, तो 35,7 स्ट्रैडल या 35,8 स्ट्रैडल आप रीइनिशिएट कर सकते हैं और वापस सेम प्रोसेस। तो यहाँ पे आप वापस 35,7 पे जाइए, 35,7 मॉनिटर करना चालू कीजिए, क्योंकि आप 35,7 के इस पे हैं, आप स्ट्रैडल पे हैं 1240 पे। तो आपको वापस ये मॉनिटर चालू करना पड़ेगा और यहाँ पे फिर से आपको ट्रिगर हो जाएगा। तो आपका इश्यू यही है कि आपको ये मॉनिटर करना पड़ेगा, कुछ आपके कंडीशंस होने चाहिए जो आप यूज कर सकते हैं कि जिसके हिसाब से आप रीइनिशिएट करते हैं। एक तो आपको जो सिंगल कॉल के साइड आप जो जाएंगे वो आपको डिसाइड करना है, और वापस जब स्ट्रैडल इनिशिएट करते हैं वो आपको डिसाइड करना है। तो बहुत डिफिकल्ट तो है वो, उतना तो है, क्योंकि वो इजी तो नहीं है। और वो जैसे आपने कहा है मैसेज में, आपने कहा था कि विपसॉस बहुत आते हैं, विपसॉस तो डेफिनेटली इसमें आते हैं, उतना तो है। सर वो प्रॉब्लम बस वही है, जिस दिन विक्स बहुत हाई होगा, वॉलेटिलिटी ज्यादा होगा, दोनों साइड का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है। हाँ वो तो है। आप बहुत सारे वेरिएशंस तो है सर, लेकिन आप एक जो है आप ट्राई करूंगा मैं ये वाला मेथड भी। हाँ एक वेरिएशन बता देता हूँ। आप फाइनली ये जो आप एक साइड का जो आप बंद कर देते हैं, सो जो आप 35.9 जो हुआ था, तो एक साइड का जो बंद कर देते, मैंने आपको इसके पहले इसमें बताया था कि जब भी आपका जो एक मिनट 35.9 पे मैं जाके बताता हूँ। हाँ यहाँ पे जो आपका पहली बार जब ट्रिगर हुआ, तो एक्चुअली पुट साइड का क्लोज करने के बजाय आप ये कर सकते हैं कि इसके थोड़ा नीचे वाला 35.7 का जो है आप बाय कर ले, 35.7 का बाय कर लीजिए। तो उस साइड रिस्क आपका बहुत कम हो जाता है, और कॉल जब तक फिर चलता है आप कंटिन्यू कर सकते हैं। वापस यहाँ पे जो है वापस आप वो जो 35.7 का बाय किया था वो वापस उसको क्लोज कर सकते हैं आप। वापस ये स्ट्रैडल में आप आ जाएंगे, और वापस फिर ओनली ये पॉइंट पे आप वापस इसको हेज कर लीजिए, तो आपके हेजेस कम हो जाएंगे। फिर आपका ऑलमोस्ट पूरा दिन आपका मेरे ख्याल से फिर चलेगा। ये सिर्फ 35.9 पे चला सकते हैं, शायद आप फिर से यहाँ करके यहाँ इनिशिएट कर सकते हैं, इसमें आपको लॉसेस कम आएंगे मेरे ख्याल से। तो इसमें क्या है, एटलीस्ट आप स्ट्रैडल्स चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ एक 35.7 ऐड करेंगे, फिर निकाल देंगे, ऐड करेंगे, निकाल देंगे, हेज रहेगा। जो भी साइड आपका रिस्क है उस साइड आप हेज कर लीजिए। तो इसमें आपको ये मैंने देखा है कि इसमें लॉसेस कम आते हैं, इसमें आप बेटर मैनेज होता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा रिस्क आप ट्राई करूंगा इसको भी। श्योर। ओके और कोई क्वेश्चंस?
कोई particular tool जिसके बारे में? Can you explain about PCR? PCR. Okay. PCR, see, this is where we display PCR. This in cumulative OI change, it is the overall PCR for the script. This is not for any particular selected strike or anything. Even if you select particular strike here, the PCR keeps showing for the whole script. This is the overall PCR. The idea here is whichever side the PCR is trending, that is the direction, overall direction of the market, or this particular strike, basically, this particular script. So currently Bank Nifty, since the PCR is going down since morning, so the market is down basically. So that if you know the concept of PCR is simple, it is put OI divided by call OI. So if this keeps on falling, that means either the put writing, put is unwinding, or the call writing is going on, call buildup is going. Only then will the PCR keep coming down, because it's put OI divided by call OI. So put OI has to decrease, or call OI has to increase for the PCR to fall. So that is what is happening. So that means it is bearish. Call writing is going on, or put unwinding is going on. So this is the main. If the put PCR is steadily going up, then the market is going up. PCR is steadily falling down, market is going down. And the second thing is these areas, flat areas that you see, is where the PCR is not changing much. What we have done is we have actually rounded off. If you see the PCR in this pop-up that you see, cursor pop-up, it is rounded off to 2 decimals. We are not showing 4 decimals, so as to show you the flat areas where the PCR is going flat. So it is not changing much. So these are the points where the price is consolidating. So this will tell you that the price is consolidating from here. Most likely, the direction in which PCR is going, that will continue. Or in some cases, from this particular points where the flat PCR is there, the price will reverse. So this second thing to monitor is the flat areas on PCR. This is one, this is one, this is one. So these are the one. And if you see, if we go to some historical, if you see some other day, you'll see that this is basically a very confusing day. So you will see that the PCR initially went up with the price here, then it reversed. So you will see the flat areas. When I say you can consider this to be kind of a area from where reversal could take place. So the trend has changed from this particular area. So the trend is down here. Now this is another flat area here, which is indicating consolidation. Flat here, and then flat here, flat here, flat here. So here, this is all confusing. The areas, this flat areas indicate that there is a consolidation. Now it can continue down from here, where this downtrend will continue, or in this case, it has actually reversed. But yeah, not on all days you will get clear-cut indications. Most of the days you will get clear-cut indication. Eventually here, actually, it went the other way. If you see, price went up, PCR went down. So this also can happen. You have to be careful. But there will be on days like this where you will get clear-cut indications where PCR will just keep going in one direction. Happens on trending days. Even on sideways days, sometimes it will not be this way. You will get clear-cut indications from where price is changing, but you will also have to be careful on these days here when the price completely diverges from PCR. You should just probably stay out of the trade over here because the trend is not clear, or just stick to price in such cases that price is going up. This is about PCR. If you want selected strikes PCR, you can go and check here, price versus OI. If you plot PCR here, it's for the particular strike. So for particular strike,
put and call OI. This is the PCR. This also will give you some indications. Whenever it goes sideways this way, price is going down, this is sideways, then it starts going down. It gives you prior indications that price is probably going to change the direction. For a set of strikes selected, you can check total PECOI here. If you select number of strikes here, near ATM strikes, the PCR shown here is going to be for that particular those particular strikes. For these strikes together, this is the PCR. If you select all strikes, it will obviously be PCR will be for the all strikes, which is similar to what we had seen earlier. So only in total PECOI, we have selected strikes PCR. So whatever you have selected, whatever strikes you select, or near ATM, 5 strikes, 7 strikes, the PCR that you see here is for these particular strikes. Otherwise, everywhere else in multi-strike, cumulative OI change, it is for the all strikes only. It is for the overall, it is overall PCR. So that's about PCR. Any other tool, any other concept? Somebody had asked about butterfly. Are you available? Should I explain? Somebody wanted to know. Nobody is there, I guess. Hello. Yeah. Can't hear you. Any question? Hello. ये ऑप्शन और ये बीटा वर्जन में क्या डिफरेंस है? सॉरी, ऑप्शन और ये बीटा जो कॉलम दिया हुआ ऑप्शन स्टेटली टू बीटा, तो ऑप्शन और बीटा में क्या डिफरेंस है? ये इसमें अलग थोड़े चेंजेस रहेंगे सर, थोड़े चेंजेस रहेंगे इसमें जो आगे जाके इसमें ऐड हो जाएंगे। ऑलमोस्ट वही टूल रहेगा। अब इसमें ये जो मल्टी स्ट्राइक है, इसमें चेंज ऐसा है कि एट द मोमेंट अभी जो पुराना वाला जो है, ये मल्टी स्ट्राइक जो यहाँ पे जो है, इसमें ये जो चार्ट होता है सुबह में, यहाँ पे इसमें राइट साइड में स्पेस नहीं होता है। ओके। तो ये बीटा का जो है, इसमें यहाँ पे राइट साइड में स्पेस आ जाएगा थोड़ा। ये इसमें यहाँ पे एक चेंज हुआ है, ये जो बाद में जाके इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये हम टेस्ट करने के पहले इसमें ऐड कर देते हैं। तो आपको अगर टेस्ट करना हो तो आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। आपको तो आपको नए फीचर्स का अगर टेस्ट नहीं करना है तो आप ये इसमें जो है ये टूल्स यूज मत कीजिए, आप डायरेक्ट सिर्फ यही यूज कीजिए। ओके। ये वाले टूल्स जो है टेस्टिंग वाले हैं, पूरे टेस्टिंग के टूल्स। ओके सर, ये आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू। Sir, can we look at the butterfly trend? Okay. Yeah, butterfly. Okay, what I generally do is I trade positional. So suppose we are on second Thursday where the expiry was there, or maybe let us take one before that. What was the expiry? May 26th was the expiry. So the Nifty price was around 16.1. So for the next expiry, which is for second, 9. Sorry, this is USD INR. No, I'll take second because we are doing a historical. Yeah. So we'll start with 16.1. And I'll just take some random, say 15.8. Sorry, this is higher. So 16.4. I'll just take a 300 point wide butterfly, and I'll take
See, 2 lots, 1 lot standard butterfly. This we are taking on 26th here. Yeah. The idea is to now for butterfly trade is to keep the price line above this lower line. Yeah. Keltner. So this is using Keltner. I'll give you the example using Keltner. So next morning, basically, once the price opens below, you need to go and check what has happened. What has happened is price has broken above on 27th May, above, and it is opened around 16.3. Yeah. So 16.3 is on this side, on the call side. So the risk is on the call side. So there are two things you can do. You need to adjust either a short strike, or you can adjust the long strike also. The main aim is going to be to get this price above this line, because here otherwise if the price is going down, then there is a risk. So to cut down risk, what we need to do is you can move this up by 1 strike. Something wrong with my net. Okay. So on 27th, now we move 1 strike up here. We move from 16.1 to 16.2, and now the price is above the band here. Yeah. So you can just hold on to this, and then the aim is to just maintain it this way. And you don't have to do anything, but once if the price goes flat this way, price goes flat this way, you keep checking the chart. If the price is going up and up, what you need to do is too much away from your outside hedge strikes. If it is going too much above, then you need to adjust. Because what happens is next day, the whole of 27, nothing happened. On 30th, it opened at 16.5. Right. So what is going to happen is your price is going to go flat. Since your whole delta has become positive, you are fine, you are safe here, but then you'll not be making too much of profits here. So you need to adjust your butterfly. You can either take this up to 16.3, or you can get this down to 16.3. You can get your buy closer. You can do anything, because this will be in profit, so you can get it to book some profit, or you can just take this also to the upside. So this will just tilt it this in slightly in your favor. This may or may not do anything, but this is nothing much you can do beyond this. Now all these adjustments, but of course you'll end up in profit. That is there. If the price had not changed much, your profit would have been a lot more higher. Yeah. So that is one. Now the other way of adjustment, I'll go back and reset it to 16.1 here, like we were on 26th. We had initiated on 26th here. Another one of my favorite way to do the adjustments is, as soon as price has gone up and your upside is on the risk is on the upside, then what I do is on the lower side I add 1 lot here and then 1 lot here. This is also a similar way to change the delta and make it positive. You're adding a debit spread, 15.8, 16.1 debit spread to this. Okay. You're just adding there. So you can do that also. That is also a similar adjustment. The result is going to be similar as what we did with here. The only thing is that the potential of profit would be slightly higher in this case. Now, of course, the disadvantage here was that the price really shot up like anything and went totally beyond the range of the butterfly. But fine. Similarly,
it has gone flat here. So 30th morning, you can go and adjust a little bit and get this, take it to 16.2. It has way gone beyond this 16.5. So there is no problem of you can move it here and change it delta to more positive. So the result is almost similar. I mean, you are here, the change is here. So slightly more, you were around 580 and about 30-40 points you would have got on, probably on expiry day. You can close it off because there the scope would not be there. You would realize that there is no scope in this trade when the price goes this way. Okay. And even if you, after changing, because there's nothing more you can do for this trade, but you would obviously close this in profit, because on the first day your loss would not have been much. Let us see how much the loss was on the first day. This was, sorry, 16.1. 16.4, 16.1, 15.8. You would probably have initiated this around, say, 315 or so, 72 to, on say 930, we are in 72 to 10 points with some slippage and all that, 12, 13, 14, 15 points worst case. Yeah. Yeah. You were only 10 points down. So 15 points down, you would have easily covered that with adjustments. What happens is, what you can do is, if you want to be more aggressive, yeah, what you can do is on this year, on the second, and you're initiating on 26th evening. So this somewhere around, check the at the money range here, 200, 300, almost 400 points is the straddle range. So you can actually have 400 points gap here instead of 300. So what you would have is, you would have more flexibility of adjustments. Okay. So you could have gone more aggressive with your adjustments, and then you could have made your delta more positive with your adjustments, and you could have captured a little more points. Okay. And this will really shine not in such trending moves as these. This was a really strong move from here to here, where standard butterfly without adjustment would have gone into loss. But here, with your adjustments, you have captured a little bit of profits. But when the market goes sideways, something like this, then you would be able to capture a lot more profits with your maybe one adjustment here, then you would get it back to neutral over here, maybe another adjustment here. So you would be able to capture a lot more here, deltas using adjustments, say just similar adjustments. And so if in a sideways market, iron fly will be much better, giving profit than. Yeah, and iron fly, anything. I mean, I don't think it wouldn't matter that much. Iron fly, even iron condors, you can do. Iron fly and butterfly, I don't think I found it to be very similar. The adjustments would be very similar. It's just that you would have to move two options. So even this would actually be similar. With iron fly, it is different. What you can do is, iron condor, not iron fly. Why is this not changing? One minute. I'm not able to go to one. Something wrong with my 1 minute. Close. So I can't hear you. Can't hear you. Somebody, I think somebody is asking something. So your audio is not clear. Your audio is not clear. Probably, can you reconnect? I've connected. Okay. You were asking that? Somebody was asking something, and yeah. Okay. Yeah, this is
what you can do here is you will get some more flexibility here where you can initiate a similar trade. In Iron Condor, or you can have based on the straddle width. Let us, if we take the same example, and if we go to 2nd June, yeah, 2nd June, I will go to Nifty. 16,400 difference was there, so I'll go to 16,500 on this side. Same, and lower -5 would be 16,100 minus 15,600. 15,600 would be here, and this you can take it based on, you can go still further down by say 200-300 points, higher by 16,800 or so. It depends on your risk appetite. Here I have gone by 300 and 15,300. Obviously, you can't do this with Zerodha. You'll have to use some other broker. Something wrong with my net connection. You're able to hear my voice properly because my net is... voice I can hear you. Okay. This is a little bit slow. Yeah. Okay, here in this case, what's going to happen is you have initiated over here, see somewhere over here, and next day you get an adjustment. So this is from -117 to -127. Again, about around 10 points loss at the present. Here you have your advantage. You'll probably have more adjustments here, but what you'll do is since the price has gone up, upside is at risk, but what we'll do is we'll move this higher. We'll move this higher by, maybe you'll have to move this by 200 points and then check. You'll have to check. You'll have to check and then adjust your positions that way first. So here, this will work here. I have moved it 200 points up, and here the price is above the bands or near the upper side. It is fine. Yeah. Now you can hold it. From -187, your adjustment has come again on 30th. 187, 20 points we have covered. Yeah. His profit is there. So here what we'll have to do is we'll have to just take it further high. Oh. So 16,000, but you'll have to see now because it may not be enough. 30th. It is here. Again, you get adjustment over here because you'll be again in loss over here. Yeah, loss. Yeah, it'll be loss. So you again move it here. This way. Here, maybe almost break even. Here, 31st May. Sorry, 31st May. 31st May, where it was in the afternoon at 13,145 to the upside again. So I'll still move it up. So where is the price? Just keep an eye on price also. 16.6. So yeah, it is way higher than it's higher than this 16.6. So you can comfortably take this up. The idea is to get this to until here and then only then move this. This is, you're comfortable here, from here to here again on 1st June. Almost, we are almost at break even, or maybe slight few points will be in loss. When was that, 30th or 31st? We were here actually, I think. Actually, this is not sufficient here because you are at the lower band at 145. So this is not sufficient. You can take it one strike up further. '31st, 145 here. Now here, I usually don't adjust at 315 or so. I avoid it. So you leave it
over here and adjust only over here. Next time. On first 130, you will see that price has started coming down. And at 130, your price is around 16.5 or so. So at 16.5, your adjustment would be, you are between this and this. You are between this and this. It's up to you now. You can either move this down over here to 16.5, or you can move this up. It is up to you. This is not enough here. This is not enough. Okay. So this is, we have moved it here. So this, from here you get 1345, 13 minus 346 to 30 points profit. Yeah. You can move this, or you can wait till 9:30. I generally 3:15 in the evening. I don't adjust, and morning usually there is a whipsaw here. Morning it opens down and then settles down. So you can, if this just moves before 9:30, you can wait for it. If it is still down after 9:30, you can adjust, or you can leave it. So this way, now here we leave it here because this is still 9:25, and then from here this continues. So basically we adjusted from 13:45 over here, 3:34 to market close. Maybe you can close it off over here. Almost whatever the profit is, from minus 335 to 289, about 50 points. 50 points here. Lots of adjustments will be there for Iron Condor, but this will be a lot more flexible. And if the market is sideways, I mean, you don't have to do any adjustments at all. We have looked at a very strong volatile period, so you have lots of adjustments for Iron Condor. But otherwise, on sideways, you won't have any adjustments. You will see that you are just initiated and then you are holding for almost the whole time. It happens many times for Iron Condor. But for flies and all that, iron fly and butterfly, you'll need the adjustments because it will usually go outside the range, but still have the outside legs based on the straddle width, so it will be better. Also, one more question. In the straddles, which we do on intraday basis. Yeah. Suppose we adjust according to your Kettler channel. Yeah. If you buy the instead of taking 200 points, can we buy the width of the? You mean this instead of being a straddle, a strangle? Yes, straddle. Once it goes outside the Kettler, where we have to adjust. Yeah, you can do that. You can convert it to a strangle. Yeah, that is one of a very popular one. See that for the other day it was 35.9. Yeah. Okay. Just a heads up, 5 minutes I have to close because I have to go out at 5. So we'll quickly discuss this. Yeah, it was 13.9. So here what you do is 13.9 was the straddle you would have started with, assuming that. So here at this point, what you would do is you would adjust. The price went down. So basically you can take this down wherever the current price is. Yeah. Where is that? 1040 or so. 1040 we adjusted, and the price was around 35,669. 35.7. Yeah. So 35.7, you can take this down to 35.7. Just make it at the money. 1040 here. It is not enough actually. It is not enough here. So what you do is get this down also and make it at the money straddle. So basically you are moving the whole straddle. This also is not enough. You'll have to you would observe this. Moving this is not enough when it happens when volatility increases, volatility goes up. So you will have to know no other way but to move it down to reduce your strike. So this is at 1040 here, 1041 here over here. This is fine. So you keep this holding down, and you again have to adjust here. At 1225 again go and check. At 1225 market is down significantly. 1225 over here.
Should be around, what is that? 35.7. 700. Oh, it was then, what was it here then? 40. 780. 35.8. Okay, it was 35.8 came actually. down. Anyway, it is not enough anyway. So even this is not enough over here. So you'll have to go and get this down first over here. Keep this a straddle, or you can take it. But I think, see, the way market is moving, you'll have to keep moving your call strike down also. Otherwise, it will not be a good hedge to your put strike. So you'll have to move this. This was 12.25. So this is not enough. You'll have to take this down further. You can check this 35.4, or not enough. Take it 35.3. You can do this. This here, you can just mostly would be done. Probably here you'll get an adjustment here. At 3 o'clock, I don't know if you want to do the adjustment, you can do, or you can close it, because you would have grabbed good amount of points here. Okay, so you can do it this way. Okay. Thank you. Yeah. You can start with a strangle also. That also is, instead of starting with a straddle, that also is good. But I think starting with a straddle is always good because you get good hedge on the other side. Okay. Okay, I need to stop because I need to step out in few minutes. So I think maybe questions. Any questions are there? Yeah, questions are there. I think, but I cannot do right now. I always forget to check the chat for questions. So we'll do it later next week. I have to stop now. Thank you. Right. Thank you.